Hello, hello, mic check. Hello. I hope I'm audible to everyone on the Google Meet. If you have any audio problem, let us know in the chat box. Please do text that I'm audible to you all. Very good morning to everyone who are sending beautiful messages. Thank you so much. The audio is clear? That's amazing. Good. रेड बस ये बटन दबाना पड़ता है, ग्रीन लाइट जलती तब ऑन है, पर दोनों लाइट जल तो रही थी। नहीं रेड जल रही थी। हेलो निकल गया। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारे भी नहीं ठीक है।
We are 96 and we are starting at 100. So mic check, hello. So rolling, we are starting. Good morning, everyone. This is Dr. Mamta Sharma, organizing secretary for the International Short-Term Training Program 6, which has gained its popularity as ISTTP-6, with a chosen topic on greener living, reduce, reuse, and recycle. हरित जीवन न्यूनतम पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण. Under Component 8, Enhancing Quality and Excellence, RUSA 2 Scheme and Commission and State Project Directorate, College Education, Government of Rajasthan, India, which is organized by Raj Rishi, Government Autonomous College, Alwar, which is popularly known as RRC, is signing from this newly revamped, beautiful Jubilee Hall, equipped with ultra-modern facilities such as high-tech audio system, voice-sensitive cameras, and mics. On the behalf of our patron and principal and from the organizing committee, I welcome you all to the third day of ISTTP 6. Sometimes challenges and struggles are exactly what we need in our lives. May you welcome every effort, every struggle, and every challenge. May you open your wings and fly. आप सभी का इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी का अभिनंदन है. माँ सरस्वती ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं. वह वेदों की जननी है. माँ सरस्वती को संविधान, साहित्य, संगीत और कला की देवी माना जाता है. माँ सरस्वती की आराधना करते हुए हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं. We are beginning the third day of ISTTP-6 by remembering God Saraswati and worshipping her. A small and the fast recap from the second day of ISTTP-6. The first keynote speaker of ISTTP-6 was Professor Dr. Anil Kumar Changani, DSc, who is Professor and Head, Department of Environmental Sciences, Faculty of Science, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan, India. He spoke upon on the traditional practices of green living in the Thar Desert. Second speaker for the day was Dr. Jaspreet Singh, who had Department of Computer Science from GD Goenka, Gurgaon, Haryana, India. He spoke about research writing and citations, and I'm very proud to tell that it was very much appreciated lecture. And many of the participants have requested PPT. We have requested Dr. Singh to provide us with the PPT, and we will definitely gonna share with you all on the WhatsApp and Telegram groups. The third speaker for the day was Dr. Dinesh Chahal, the Professor, Department of Education, Central University of Haryana, Mahendragarh, Haryana, India. He spoke about greener living. He also spoke about how to move back to other prior practices, which were very known part of our families when we were living with our grandparents. The day was then concluded by the free forum and the feedback, which was organized by organizing secretary of ISTTP 6. A nation that destroys its soils destroy itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving expression to our people. Like music and art, love of nature is a common language that can transcend political and social boundaries. A true conservationist is a man who knows that the world is not given by his fathers, but it is borrowed from for his children. I will start with a quote by Paracelsus, and I think this is my favorite quote, and it is the first page of my PhD thesis as well. And from ears, it is a mantra to my ears, which is expressing a classical toxicology saying that
All things are poison. There is none which is not a poison. The right dose differentiates the poison and the remedy. That is what toxicology is all about. And being an environmental toxicologist by profession, I always believed that sustainable development is the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. That means we have borrowed this environment from our great ancestors to live in, and we're supposed to transfer it to our future generation to meet their needs in the same form as we have received, without polluting it, without destroying it, without making barren. How economic growth can become environmentally sustainable? If the world poverty is to be reduced, businesses and government must continue to pursue economic growth, but growth cannot continue without attention to the environment. A balance between the economic growth and the care of the environment is needed in all the countries, particularly the poor ones, to prevent environmental degradations, which result in the loss of economic outputs and endangers the health. So, my dear friends, here why I'm talking about, I spoke that we transcend political and the social boundaries. These boundaries are created by humans. We have not created this. God has not created these boundaries. Mother Nature has not created these boundaries. Humans have created these boundaries. What is important to mention here is that the poor countries, all the third world countries, cannot spend a lot of money just to save the environment because of their breaking economy or use of technologies which are environmental friendly, because such technologies which are available as of now are costly in terms of money and procurement. But we all know that we only have one earth, one environment, one mother nature to live in. Maybe we are from different countries. But if one country endangers the environment, another country cannot remain unaffected. So the environment or the sustainable development is a matter of a concern to every country, every person, including you and me, who is living on this beautiful planet named Earth. This is something which I really feel in my heart, what I have said here, that जो भी टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। अगर आज वो अवेलेबल होती तो ये अरेबियन सी और इंडियन सी और सारे सी को हमने मीठे पानी में बदल दिया होता, पर हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। पर जो भी टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में 3 फरवरी 2023 में जो भी अवेलेबल है वो बहुत कॉस्टली है। पहली बात, खरीदना कॉस्टली है, दूसरी बात उन्हें लगाना कॉस्टली है, तीसरी बात उसे रन करना कॉस्टली है। तो अगर पुअर कंट्री अनाज उगाने की बजाय उन टेक्नोलॉजी को खरीदने लग जाएगी, उन टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय करने लग जाएगी, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने लग जाएगी, तो उसके देश के लोग तो भूखे मर जाएंगे। एंड देयर द इकोलॉजी इज गवर्न इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो माय डियर फ्रेंड, this is something which I'm sharing with you. I always think before I go to sleep in the night, and I always say कि yes, it's the time to wake, it's a time to think together, it's a time to think, it's work together. Because अगर एक देश पर्यावरण को खराब करता है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो डॉलर्स को यूज करता हो, चाहे वो रुपीस को यूज करता हो, पर पर्यावरण को वो प्रदूषित करता है, तो उसके पास वाली कंट्री या उस वो इस दुनिया में रहने वाली सारी कंट्रीज उससे अफेक्ट होती है। अगर आपको ध्यान हो तो ISTTP 5 में मैंने आपको बहुत सारे ऑयल स्पिल्स के बारे में बताया था। ऑयल स्पिल वाज डन इन यूके, एंड उसके बाद उसके साथ वाली 4 कंट्रीज ने उसका नुकसान का भुगतान किया। So with this, I will catch you again on the same. And with lot of gratitude, I would like to introduce to you the first keynote speaker of Heard of ISTTP. She's a dear friend. Her name is Dr. Sudha Sukhwal Stringi. She's working as a professor in the Department of Chemistry at Rajrishi Government Autonomous College, Alwar. She has got rich 28 years of teaching experience and the research experience.
She has attended many seminars, conferences, and workshops. She has published many papers in different books in the international journals. And as of what I know, that she has very good research work on spectroscopy. Ma'am, please share that also with us. What was your area of specialization? And she is also the one who is giving us back support in all the programs which Environmental Toxicology Department of Rajrishi College is conducting one and after the. With lot of respect, gratitude, and affection and love, I would like to call upon Dr. Sudha Sukhwal. Ma'am, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन. Stage is all yours. Can I have the camera on, ma'am? Thank you so much, Dr. Mamta. Good morning, everyone. Namaskar. Respected Principal Sir Professor Hukum Singh Ji, Organizing Secretary Dr. Mamta Sharma, esteemed delegates, renowned professors, I extend my warm greetings to all of you. I would be talking on the topic green living, reduce, reuse, and recycle. Think, live green, think green. So let me begin with green quote of the day. Each and every one of us can make changes in the way we live our lives and become part of the solution, as quoted by Al Gere. So green living is a lifestyle. Basically, it's making choices that preserve the Earth's natural resources. Living green doesn't require a huge lifestyle. It just involves taking small steps to protect our planet. तो बेसिकली जो आज आपसे बातचीत करने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ग्रीन लिविंग के बारे में एक जो बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते या इट्स नॉट इजी टू अडॉप्ट इट, उन सब भ्रांतियों को दूर करके ग्रीन लिविंग को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत आसानी से अपना सकते हैं, वही बातचीत मैं आज आप लोगों से करना चाहूंगी. So basically, each and every one of us can adopt green living and save this planet for our next generations. It's not yours, it's not mine, it's ours. So protect our mother nature. So love green, save green, think green, use green, be green. It's very important to be green now. Already we are too late. बहुत ज़्यादा हम पर्यावरण को प्रदूषित ऑलरेडी कर चुके हैं. अब अगर इसी स्पीड से करते रहे तो आने वाली जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए रहने लायक ये प्लैनेट बचेगा नहीं. तो आइए साथ में मिलते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे इस पर्यावरण को हम बचा पाएं. So let us discuss the benefits of green living. It reduces pollution and global emissions. It helps to conserve electricity. It conserves natural resources. It's economical. अगर हम long run में देखें तो बहुत economical है ये. It helps us lead a healthier life. So it's high time that we adopt it. Let us discuss the pros and cons of green living. So pros तो हमने देखे, कुछ और देखते हैं. Sustainable है ये, climate change को कम करता है, healthy lifestyle, reducing deforestation, less air pollution. और cons की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा time consuming है, थोड़ा high level of motivation चाहिए हमें. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करें तो वो थोड़े ज्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे और उन्हें अपना के हम बहुत आसानी से ग्रीन लिविंग को अडॉप्ट कर सकते हैं और एक इस पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं. तो बेसिकली आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी कॉमन ऐसी ग्रीन लिविंग प्रैक्टिसेस इन्हें हम बहुत आसानी से अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं
और फॉलो करके इस पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। सो जो सबसे पहली है वो है रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. So this is the basic principle of waste reduction. Reduce means to cut back the amount of trash we generate. Basically आपको ये करना है कि ट्रैश जनरेट ही ना हो घर में, जीरो वेस्ट। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुश्किल नहीं है अगर हम ऐसी जीवन पद्धति अपनाएं कि जिसमें वेस्ट हो ही ना और किसी भी कचरे वाले को आकर के उठाना ही ना पड़े। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। We should reduce the amount of waste produced. Reduce every single thing you can, be it clothes, item at home. सबसे पहले अगर बात करें कपड़ों की, तो इतने सारे कपड़े आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी है या हम अपनी भी बात करें, जितनी की जरूरत नहीं है हम उससे कई गुना ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? कंपैरिजन ऑफ, इन सब चीजों से दूर जाना है। नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, जितने सिंपल रह सकते हैं उतने सिंपल रहिए। जितने कपड़ों की आवश्यकता है सिर्फ उतना ही खरीदिए। जब बाजार में आप जाते हैं तो ये सोचिए कि जो मिनिमल आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप खरीदें। तो रिड्यूस करिए। Reuse means to find ways, new ways to use things that otherwise would have been thrown out. We should reduce the items as much as we can, जैसे clothes, make bags for shopping, make big bags for traveling, make storage bags at home. कपड़ों की आप बाजार से सपोज आप किचन के लिए आप टॉवेल्स खरीद रहे हैं, क्यों? जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो अपने यूज्ड कपड़े हैं उन्हें बहुत आसानी से वॉश कीजिए, उन्हें कट कीजिए, एक सिंपल चारों तरफ एक पाइपिंग लगाइए और वो बहुत ही आपका एक सिंपल किचन टॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप आसानी से डस्टिंग के कपड़े रीयूज कर सकते हैं। आप आसानी से जो ऐसे क्लोथ्स हैं जैसे कि जीन्स की क्लोथिंग हो गई, उनसे बहुत आसानी से रीयूजेबल ट्रैवलिंग बैग्स बना सकते हैं और जो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। मानिए मैं ऐसा करती आई हूँ और बहुत सालों से मैंने जो अपने पुराने बच्चे के या हस्बैंड के जो जीन्स के या पैंट्स के जो कि थोड़े हार्ड हैं, उनसे मेरे घर पे आपको बहुत सारे स्टोरेज बैग्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रैवलिंग बैग्स मिलेंगे और बहुत सारे सिंपल जीन्स के बैग्स मिलेंगे जिनसे मैं जब भी सब्जी खरीदने जाती हूँ तो मैं वही यूज करती हूँ। अगर मैं कार में ट्रैवल कर रही हूँ तो 3-4 जीन्स के बैग्स ही होते हैं मेरी कार में और जिनमें एक मेरा, एक हस्बैंड का, एक सन का, अलग अलग हमारी अपनी चीजें होती है। मैंने कभी बाजार से नए ट्रैवलिंग बैग्स नहीं खरीदे, बहुत साल हो गए मुझे ऐसा करते हुए। सो रीयूज कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं जिन चीजों से आप बोर हो गए, लेकिन उन्हें प्लीज फेंकिए मत या लेकिन प्लीज फेंकना नहीं है, डोनेट कीजिए। उनसे आप सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स उन कपड़ों से बना सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारी चीजें बना के उन्हें रीयूज कीजिए। और नेक्स्ट इज रिसाइकिल। तो आप जिन्हें रीयूज नहीं कर सकते उन्हें रिसाइकिल कीजिए। Recycle means to turn something old and useless into something new and useful. So you can recycle things which you don't use. तो डस्टबिन में बिल्कुल मत फेंकिए। बहुत जगह आजकल रिसाइकिल के लिए अवेलेबल हैं जगह जहाँ पे आप उन चीजों को दे सकते हैं, जैसे कि ई वेस्ट है, उसकी बहुत सारी सोसाइटीज है, मेरी सोसाइटी में स्पेशली लगा हुआ है, जहाँ पे आप अपने ई वेस्ट को जाइए और रख दीजिए, वहां पे वो रिसाइकिल होता है। तो रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक बहुत आसानी से रिसाइकिल हो जाता है, लोहा बहुत आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। ये सब हमें, ये तीनों आर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कीमत बिल्कुल कम मत समझिए। सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, अगर हम इन तीनों आर्स को
फॉलो कर पाए तो यकीन मानिए आप बहुत 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 पैसा भी बचाएंगे और इस पर्यावरण को भी बचाएंगे। नेक्स्ट है थिंक ट्वाइस बिफोर शॉपिंग। So every product we buy has an environment footprint, from the materials used to create it to the pollution emitted during manufacturing to the packaging that goes in landfills. So before buying anything, ask yourself if you really need it. Make a shopping list at home and to avoid unnecessary shopping and stick to it. Do not get tempted by things you don't need. Do not get tempted by heavy discounts. होता क्या है कि शॉपिंग लिस्ट हमने बनाई, बाजार गए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। बाजार गए, जो हमारी लिस्ट है वो तो हमने खरीदाई, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखा 80% डिस्काउंट है, हमने डाली अपनी ट्रॉली में, खरीद लिया। जबकि होता यह है कि हमें उसकी जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर आप देखेंगे लाके घर में हम वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं, हो सकता है वो सामान 6 महीने काम ही ना आए, इकट्ठा होता जाता है, रखा रहता है। फिर हम सोचते हैं 6 महीने बाद ओके काम नहीं आया, और थोड़े टाइम निकल गया फिर भी काम नहीं आया, थोड़े टाइम बाद हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। या कपड़े इतने ज्यादा इकट्ठे हुए, डिस्काउंट में खरीद लिए और अलमीराज भरी हैं, कपड़ों से अलमीराज भरी, हर बार जब जाते हैं नया खरीदा, पुराना 2 बार पहना, वो एज इट इज रखा हुआ है। शो ऑफ से पूरी तरह से बचिए, एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रखिए। अगर 5 जोड़ी कपड़े बहुत हैं अगर हमारे लिए, तो छठा बिल्कुल मत खरीदिए। यकीन मानिए लोग थोड़े दिन बाद आपको फॉलो करेंगे और सिंपल लाइफस्टाइल के लिए आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी है कि चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो क्लोथ्स है, चाहे वो ट्रैवलिंग बैग्स है, क्योंकि मार्केट फ्लडेड है। मार्केट में तो कंपनीज तो चाहती हैं कि आप जितना ज्यादा खरीद सकते हैं, वो तो आपको ल्यूर कर रही हैं। उन्हें तो चाहिए ही यही हैवी डिस्काउंट्स दे दे करके आपसे ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करवाएं। तो आपको लेकिन बचना है, आपको नहीं खरीदनी है वो चीजें जो आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए घर से शॉपिंग करने के लिए निकलने से पहले प्लीज अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाइए और उसी पे स्टिक रहिए। बिल्कुल वो सामान मत खरीदिए जो आपने अपनी लिस्ट में नहीं लिखा है। और दूसरा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप टेम्पटेड भी हैं तो पोस्टपोन कीजिए, सोचिए कि चलो ठीक है इस बार देखते हैं, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत हुई तो उसे खरीद लेंगे। तो यकीन मानिए पोस्टपोन करने से भी आप बहुत सारी अननेसेसरी की चीजें खरीदने से बचेंगे। तो थिंक ट्वाइस बिफोर शॉपिंग। डू नॉट चेंज मोबाइल फोन्स फ्रीक्वेंटली। आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है, लोग बहुत जल्दी अपने मोबाइल फोन्स चेंज करते हैं जबकि जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है मोबाइल फोन आपको हर 6 महीने में बदलने की? क्यों महंगे और एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स आपको चाहिए, जबकि जो मोबाइल फोन आपके पास है वो सालों तक, 3 साल 4 साल 5 साल बहुत आसानी से चल सकता है। और टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपको उस नई टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी आप सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में, या चूंकि नया आया है मार्केट में, इस चक्कर में जाके मोबाइल फोन या आपकी फ्रेंड ने खरीदा है तो आपको उससे कंपेयर करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खरीदना है। आप अपना वही मोबाइल फोन सालों साल काम में ले सकते हैं, अनलेस अनटिल की बहुत ही ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, प्लीज मत खरीदिए। यू कैन अफोर्ड, लेकिन ये प्लैनेट अफोर्ड नहीं कर सकता इतना सारा। आप सोचिए जीवन भर में अगर आपने सपोज 15 मोबाइल फोन्स भी बदले तो आपने कितना ई वेस्ट जनरेट किया। तो इस प्लैनेट को प्लीज बचाइए। सो मेक ग्रीन चॉइसेस। नेक्स्ट इज मेक श्योर योर बिग परचेजेस हैव बिग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं, लुक फॉर अ फ्यूल एफिशिएंट मॉडल
It will save you money as well as reduce your carbon footprint over the years. अगर आपकी छोटी फैमिली है या आप सिर्फ अपने लिए कार खरीद रहे, तो क्यों बड़ी गाड़ी खरीदनी है भाई? छोटी खरीदिए। छोटी में आप बहुत आसानी से रोड पे भी चल पाएंगे, दूसरों के लिए जगह भी बना पाएंगे, मनी भी सेव करेंगे, फ्यूल भी सेव करेंगे। तो जब सभी कुछ बच रहा है, तो सिंपल एक शो ऑफ के लिए क्यों बड़ी गाड़ी खरीदने की जरूरत है? एक छोटी कार बहुत है। हमारी सड़कों पे आज चलने की भी जगह नहीं है। तो सिंपल आप जो भी चीज खरीदें, सोच के खरीदिए कि पर्यावरण के संदर्भ में आप कैसे उसे यूज करेंगे। अगर इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है एक 5 स्टार जो एनर्जी सेफ्टी रेटिंग वाला अप्लायंस है, महंगा है, लेकिन यकीन मान लॉन्ग रन में वो आप बहुत सारी बिजली की बचत करेगा। और अगर बिजली की बचत तो हमें चाहिए ही चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी की बहुत कमी है, किसान को आज बिजली नहीं मिल रही क्योंकि हम अननेसेसरी की बिजली खर्च कर रहे हैं। तो if you are buying an electrical appliance, look for 5-star energy label to find the most efficient. You can also buy appliances that use solar energy. विंड एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं। So make sure your big purchases have big environmental benefits. तो शो ऑफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से खरीदिए, और जो भी चीज खरीदे पर्यावरण को जरूर ध्यान में रखिए। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमें अपनानी है वो है गो प्लास्टिक फ्री। सो मैंने कोशिश की है कि अपनी किचन प्लास्टिक फ्री कर दूं, और बहुत हद तक मैंने ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि मैं उसे जीरो तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मेरी किचन में प्लास्टिक की चीजें नहीं रहें, और नहीं हैं, बहुत ही मिनिमल हैं, अगर हैं तो भी। Plastic is everywhere, be it land or be it oceans. It's killing thousands of animals every year. They die after ingesting it, or they get entangled in it and die. So cut down your plastic waste. Plastic oceans decompose and release toxic chemicals. A threat? Marine life. कैसे जिएंगे? उन्हें भी तो जीने का उतना ही अधिकार है जितना। स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन्स। आप देखते हैं आजकल बहुत कॉमन है अखबारों में ये पढ़ना कि एक गाय सर्जरी हुई, इतने किलोज ऑफ प्लास्टिक निकाला गया और उसके प्राणों की रक्षा की गई। वो प्लास्टिक आया कहां से? वो आपने और हमने ही तो डस्टबिन में फेंका। तो अगर हम उसे अपनाने से ही दूर हो जाएंगे, प्लास्टिक यूज ही नहीं करना है, घर में लाना ही नहीं है, तो वो डस्टबिन में जाएगा, जानवरों तक पहुंचेगा ही नहीं, और वो उसे खाएंगे ही नहीं। तो बेसिकली ये एक साइकिल है जिसे हमें रोकना है। उसके लिए सिंपल यूज रीयूजेबल क्लॉथ फॉर शॉपिंग, ट्रेवलिंग, स्टोरिंग थिंग्स एट होम। Do not use plastic water bottles, plastic bags, plastic straws, plastic utensils, डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं जिसमें हम खाना खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक जार्स। Studies have found that certain chemicals in plastic can leach out of the plastic and enter into the food kept in it. And some of these chemicals have been linked to health problems such as obesity, reduced fertility. तो प्लास्टिक हटाना है, चाहे वो बॉटल के फॉर्म में है, चाहे वो किचन में, बहुत कॉमनली किचन में आप देखेंगे प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना स्टोर होता है। अपनी किचन को देखिए जरा आज, आप उसमें क्या क्या बदल सकते हैं। तो शुरुआत आज से ही करनी है, ठीक है ना? ये नहीं सोचना है कि चलिए ये तो सिर्फ एक लेक्चर था, सुन लिया काम खत्म ना। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है इसे लेक्चर बनाना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने किचन में देखिए आज, और जितनी प्लास्टिक की चीजें आप हटा सकते हैं हटाइए। अगर प्लास्टिक के जार्स में आप
चीजें स्टोर करते हैं तो प्लीज उन्हें रिप्लेस कीजिए स्टील ग्लास से, मिट्टी से, ऐसी चीजों से जो हमारे पर्यावरण को और हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। सो इफ आई कैन यू ऑल्सो कैन। जब मैं कर सकती हूं तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट श्योरली जाइए, एक्सप्लोर कीजिए मार्केट में कौन कौन सी चीजें आप हैं जो कि इकोनॉमिकल भी है। ये बिल्कुल मत करिएगा कि जाएं और महंगी महंगी चीजें खरीद के आप अपनी पूरी किचन को बदल दें, ना, ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो वो चीजें इकोनॉमिकल भी हों और बिल्कुल सालों साल चलें, और उनसे आप जो अपनी प्लेट में फूड सर्व करें वो बहुत ही सुरक्षित हो। जब भी बाहर जाएं एक स्टील बॉटल जरूर कैरी करें ताकि आप बाहर से प्लास्टिक की बॉटल वाला पानी बिल्कुल ना खरीदना पड़े। अपने जीवन में सोचिए कि प्लास्टिक की बोतल जो बाजार में है वो हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है। सो अपने पर्स में या एक सिंपल, आजकल बहुत सुंदर सुंदर आप अपने क्लोथ का बैग बना सकती हैं अपनी बॉटल की साइज का, और उसमें आप अपनी स्टील या ग्लास बॉटल में पानी ले जाइए। आज से ही, अभी से ही करना है, बनाइए और हमेशा उसे अपने साथ रखिए और ये प्रण कीजिए कि मैं बाजार से प्लास्टिक की बोतल वाला पानी खरीद के आज के बाद नहीं पीऊंगा। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप उससे अपनी बोतल को रिफिल कर सकते हैं। हम खुद कॉलेज में ग्लास बॉटल या स्टील बॉटल यूज करते हैं, वापस कॉलेज में आते हैं, गर्मियों में बहुत पानी की जरूरत है, हम उसे बार बार रिफिल करते हैं और उसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो मैं चाहूंगी आप अपनाएं, दैट इज डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स दैट एंडेंजर्स वाइल्ड लाइफ। When shopping for clothes, always choose something vegan. Do not buy products made from animals, such as clothing and accessories, and products, woolen products. In the name of fashion, so much cruelty is done on animals. The vast majority of the billions of animals who are killed for their skin, wool, feathers, or fur endure all the horrors of factory farming. Animals suffer at the hands of workers who may roughly handle, kick, and beat them. In addition to causing the suffering and deaths of billions of animals each year, the production of animal derived materials, including wool, fur, and leather, contributes to climate change, land devastation, pollution, and water contamination. We can buy clothes made up of cotton, polyester, bamboo, cork, mushrooms. That is, always look for vegan fabrics. तो हमेशा ये बहुत सिंपल है करना। जो भी बाजार में आप चीज खरीदें, सिंपली देखें लेबल पे कि ये किसी भी एनिमल को मार के तो नहीं बनाया गया है। सो सिंपल कॉटन, सब कॉटन तो सबसे, हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उसमें सबसे जो सुटेबल है वो कॉटन है। कॉटन से कोई एलर्जीज नहीं है, कॉटन बहुत आसान है, सिंपल है, आप आसानी से उसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई ड्राई क्लीनिंग का झंझट नहीं, आसानी से धो सकते हैं। तो सिंपल ऐसे कपड़े खरीदिए जिनमें कि एनिमल्स को ना मारा गया हो। सो ऑलवेज लुक फॉर वेगन फैब्रिक्स। नेक्स्ट इज ऑलवेज पे अटेंशन टू लेबल्स। कितने लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं और सबसे पहले किसी भी चीज को खरीदने से पहले लेबल्स को पढ़ते हैं? पूछिए अपने आप से, क्या हर चीज जो आप खरीदते हैं उसके लेबल को आप पढ़ते हैं? हर चीज जो हम, उसके लेबल को आप पढ़िए। A lot of information is stated on the packaging of food and drinks. Actually, the information on labels is many times not immediately clear to everyone. According to the Food Information Act, every food product must be labeled with certain information. For example, the origin of the product and aspects such as health, safety, and the environment. With this information, consumers must be able to make a good decision when purchasing.
choose healthy options. Example, choose product which mention no added colorings, no preservatives, or no sugar. Always check expiry date. It's very important to read all the information written on labels. यकीन मानिए, अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो हर चीज जो आप खरीद रहे हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट है, चाहे वो दाल है, चाहे वो चावल है, कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं, क्या वाकई में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और पूरी पैकेजिंग को पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आज से पढ़ना शुरू करिए और जो टाइम आप शॉपिंग में इन्वेस्ट करते हैं उसे बढ़ाइए। हर लेबल को पढ़िए। जो भी आप खरीदते हैं, ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि लेबल्स पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप खाने का कोई आइटम खरीद रहे हैं तो देखिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर प्रिजर्वेटिव्स हैं तो अ स्ट्रिक्ट नो नो, क्योंकि कोई भी प्रिजर्वेटिव लॉन्ग रन में सेफ नहीं है। अपने बच्चों को मत खिलाइए। जितनी भी आप समझते हैं जो पैकेज फूड खरीदने की जो आजकल प्रथा चली है बाजार में, शेल्व्स में किसी भी स्टोर में जाएं तो भरी पड़ी हैं दुकानें पैकेज फूड से। आप सिंपल बिस्किट्स हैं, नमकीन है, सब खरीद के लाला के अपने घर में सजा देते हैं। बच्चे डिमांड करते हैं, आप उन्हें खोलते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ को। उनमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो ट्रैश हम क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ पर्यावरण के लिए नुकसान कर रहा है। क्यों नहीं हम बिस्किट घर में बनाएं? पुराने जमाने में जो हमारी माँ दादी वो सब हमें कभी बाजार से खरीद के तो नहीं खिलाती थी। क्यों? क्योंकि बाजार से खरीदी हुई चीजों की जो शेल्फ है वो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर आप घर में कोई भी चीज बनाते हैं तो यकीन मानिए थोड़े दिन बाद में वो खराब हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि खराब होने से पहले ही उसे कंज्यूम कर लें। तो बहुत जरूरी है हम लेबल्स को पढ़ें। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स, कलरिंग्स, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें हम ना खरीदें। और हम हर चीज घर में कुकिंग करके, जितनी भी चाहे मेहनत लगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है ग्रीन लिविंग, लेकिन यकीन मानिए आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत मिनिमम होगी अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे। बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर सपोज मैं अपने फादर की बात करूं, मुझे नहीं लगता वो कभी डॉक्टर के, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल जीते हैं। वो सारा कुछ घर का बना हुआ खाते हैं और हर चीज खाते भी हैं, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो केक है, सभी चीज खाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, लेकिन वो सब घर पे बना हुआ होता है, जिनमें कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। तो कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज बाय ऑर्गेनिक फूड। Go for organic food. It may cost more, but it's more healthy for you. You can enjoy better taste. You are avoiding chemicals. You are preserving the system, reducing pollution, and protecting soil. So choose organic products and enjoy green living. यकीन मानिए थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन आज अगर एक डॉक्टर के पास हम दिखाने जाते हैं, 500,000 रुपए तो मेट्रो सिटीज में बहुत नॉर्मल है। उसके अलावा जो दवाइयाँ और उन दवाइयों के जो आफ्टर इफेक्ट्स, जो आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्पैन को डिफिनिट करते हैं। तो बाय ऑर्गेनिक फूड जितना संभव है, और सबसे आसान तो है घर में उगाकर खाइए। यूज वाटर वाइजली। वाटर कंजर्वेशन इज टुडेज नीड। टर्न ऑफ द टैप्स। डू नॉट लीव टैप्स रनिंग व्हाइल ब्रशिंग टीथ। बहुत कॉमन है, ब्रश करते करते नल चलता रहता है, कपड़े धोते धोते नल चलता रहता है। क्यों? बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम बहुत बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। रिसाइकिल वाटर एंड यूज फॉर इरिगेशन, वाटरिंग प्लांट्स। कंजर्व वाटर बाय टेकिंग शॉर्टर शावर्स,
repair leaky taps, choosing low flow water appliances options. तो पानी बचाना है, आरओ प्लांट हर घर में है आजकल। उससे जो पानी निकलता है उसको कभी भी वेस्ट मत कीजिए। उससे आप बर्तन धो सकते हैं, उससे आप कपड़े धो सकते हैं, उससे आप पौधों में दे सकते हैं। तो पानी की हर बूंद को बचाना है, हर बूंद की कीमत समझिए। Save up your dirty clothes. Washing a full machine load of clothes uses less water and energy than 2 half loads. Run dishwashers only when full. ये नहीं कि 4 कपड़े लिए मशीन चला दी, नहीं, पूरा फुल लोड चलाइए। हो सके तो हाथ से धोइए, पानी बचाइए। Use buckets and tubs to wash your vehicle rather than a continuous running hose. पाइप लेके जिसको देखे वो अपने घर के बाहर गाड़ी धोता हुआ मिलता है। क्यों? एक सिंपल बकेट भरिए और एक बकेट मोर देन सफिशिएंट है। इवन हाफ बकेट पूरी कार या अपना व्हीकल धो सकते हैं। तो प्लीज उस पानी को हमें संरक्षित करना है। वाटर लॉन्स इन गार्डन्स ओनली व्हेन नीडेड। आप देखेंगे पानी चला के लोग घंटों छोड़ देते हैं और वो गार्डन्स में जाता रहता है, जाता रहता है, बहता रहता है। और गरीब किसानों को और जो खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए पानी की कमी है। आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ बहुत ज्यादा ड्रॉट है। लेडीज किलोमीटर्स चल चल के एक सिंपल पानी का घड़ा भर भर के लाते हैं। तो उन पिक्चर्स को हमेशा ध्यान में रखिए, उन लोगों को हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप पानी का वेस्टेज करें। कंसिडर xeriscaping your yard. So xeriscaping basically it's a landscaping technique that uses drought adopted plants like cacti that require less water and maintenance over time and provide habitat and food for birds and bees. Reuse as much water as possible. Go for rainwater harvesting at home. Capture rainwater by installing a tank at home and use it. सबसे आसान तरीका है रेन वाटर यूज करना। हर घर में आजकल रेन वाटर हार्वेस्ट गवर्नमेंट बहुत प्रमोट भी कर रही है। आप जब भी घर कंस्ट्रक्ट करें या बाद में भी आप सिंपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अडॉप्ट कीजिए। घर में एक टैंक बनवा करके आप उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी डेली नीड्स पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेस ड्राइव ग्रीन। तो भाई चेंज योर ड्राइविंग हैबिट्स एंड रिड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ड्राइव लेस, वॉक मोर फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। It saves money too. Driving less reduces your carbon footprint. Walking reduces parking headaches and fees. कहीं भी जाते हैं गाड़ी लेके पार्क करते हैं वो एक हेडेक, पार्किंग वाले को पैसा देना है वो एक हेडेक, सड़क चलने की जगह नहीं है वो एक हेडेक। तो क्यों ना वॉक करना शुरू कर। कुछ किलोमीटर्स तो डेली हम चल ही सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में लाने की बात है और इन चीजों को अपनाने की बात है। It will help you to lose weight and keep healthy. डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप डेली वॉक करते हैं। Walking more is good way to lower greenhouse gas emissions. Walk, carpool, use bicycle, use bike or public transport like bus or train. Consider a vehicle free day. एक हफ्ते में 15 दिन में एक व्हीकल फ्री डे जरूर रखिए, अपना कर देखिए। निश्चित तौर पे आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। एक बहुत सिंपल चीज है जो लोग नहीं करते। गाड़ी जब खराब होती है तो उसे ले जाते हैं मैकेनिक के पास, वो नौबत आने ही नहीं। Do regular maintenance of your vehicle to increase your fuel efficiency. खराब ना हो, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल को बचाइए, सेव एनर्जी। सो सिंपल, ये सारी बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें अपनाना है। हम सुनते तो बहुत हैं, लेक्चर्स बहुत सारे आपने इसके पहले भी सुने होंगे जिनमें हम ये सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन इन्हें अपनाते कम है। क्योंकि अगर हम अपनाते होते तो आज पर्यावरण की ये हालत होती ही नहीं। सो मी एंड ममता, हम दोनों बहुत बार कारपूल करके आते हैं कॉलेज। यस वी डू।
फिर है एनर्जी को बचाना, सेव एनर्जी। घर में अगर 3 कमरे हैं तो शाम होते ही तीनों की लाइट्स जली हुई है, क्यों? हम रहते तो एक ही कमरे में हैं। टर्न ऑफ लाइट्स, फैंस व्हेन नॉट इन यूज। अनप्लग डिवाइसेस, अगर नहीं काम में आ रही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिल्कुल ऑफ कीजिए स्विच। ये बिल्कुल जरूरी नहीं आपको switch करके उसे छोड़ा है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, चाहे कम ही सही। एसीज, 18 डिग्री पे एसी चला के कंबल ओढ़ के सोना बिल्कुल बंद कीजिए। सेट अप योर एसीज एट 25, 26, 27 डिग्रीज। जरूरत ही नहीं है कंबल ओढ़ के सोने की। तो अब तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री पे ही सेट रहे और आप उसका उससे कम कर ही नहीं पाए, लेकिन हमें करना है बेसिकली। तो टेम्परेचर प्लीज 25 से कम बिल्कुल नहीं कीजिएगा आज के बाद, और कंबल ओढ़ के सोने की बिल्कुल आदत को बदलिए। यूज एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स लाइक एलईडी, सीएफएल्स एक्सेट्रा फॉर मोर एफिशिएंट लाइटिंग। यूज कंप्यूटर्स, अगर जरूरत नहीं तो आप उसे ऑफ भी तो कर सकते हैं, ऑफ करके छोड़िए, आप निश्चित तौर पे बिजली बचाएंगे। स्विच टू एफिशिएंट अप्लायंसेस, सेव मनी विद सोलर एनर्जी। सोलर कुकर में भी हम खाना बना सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स इन योर होम, और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने घर की जो आवश्यकता है उसे पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। हमारे कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने घर पे रूफ टॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल भी किए हुए हैं और वो बहुत आराम से उससे अपनी आवश्यकता तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की भी कर रहे हैं। ड्राई क्लोथ्स इन सनलाइट रादर देन यूजिंग इलेक्ट्रिक ड्रायर्स। क्यों वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं? नहीं, जरूरत नहीं है, आप आराम से सनलाइट में सुखा के बिजली बचा सकते हैं। यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, या ऐसे पैंस यूज कीजिए, ढक करके खाना बनाइए ताकि उससे एनर्जी आप सेव कर सकें। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम बहुत आसानी से अपना सकते हैं, जिससे हम अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, पर्यावरण को भी अच्छा रखेंगे, एंड दैट इज एंजॉय गार्डनिंग एंड ट्रूली गो ग्रीन। गार्डनिंग इज गुड फॉर योर हार्ट, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, मेक्स यू हैप्पी। Plants act as highly effective air cleansers of carbon dioxide and at the same time release clean oxygen. Gardening cleans and protects the soil also. Get some indoor plants. House plants improve your indoor air quality. आजकल जितना प्रदूषण है उससे सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित करने का सबसे आसान तरीका है घर के अंदर भी हम कुछ इंडोर प्लांट्स लगाएं और शुद्ध ऑक्सीजन पाएं। Is a great susceptible practice. You can grow vegetables, flowers, medicinal plants like tulsi and giloy. जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है उसमें तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता था। क्यों? क्योंकि तुलसी के बहुत बहुत सारे उपयोग हैं। वातावरण को शुद्ध रखता है, आपकी हेल्थ को शुद्ध अच्छा रखता है। दैनिक उपयोग में अगर आप तुलसी का उपयोग करें तो सालों तक आप अपने आप को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। गिलॉय, आप अगर तौर पे गिलॉय का उपयोग करें, बहुत आसानी से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हम सिंपल गार्डन में लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं और इनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। एक सिंपल सुबह तुलसी की चाय पीजिए, एक सिंपल गिलॉय को पानी में उबाल के पीने से आप बहुत हद तक अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और कोरोना में बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है। Use a smart irrigation system to save water, time, and energy. Do composting. This involves decomposing organic waste such as food scraps, paper products to create compost. बहुत आसानी से आप घर में कंपोस्ट बना सकते हैं, उसे अपने गार्डन में या अपने गमले में डाल करके बहुत आसानी से आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो आप इससे बहुत हद तक काफी ट्रैश रिड्यूस करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो फॉलो करनी है हमें वो है बाय लोकल। सो ट्राई गोइंग टू अ लोकल मार्केट नियर यू। क्यों हमें शॉपिंग करने बहुत दूर दूर जाना है? एक सिंपल कपड़े का थैला उठाइए, घर के आस जो लोकल मार्केट है उसमें जाइए,
Shopping from a local market will save time, energy. मार्केट में जगह नहीं है, व्हीकल पार्क करने की जरूरत नहीं है, वॉक करिए. हेल्थ फिट रखेंगे, पैसा बचाएंगे जो पेट्रोल में आप खर्च करेंगे. और सबसे बड़ी बात, यू विल बी सपोर्टिंग लोकल पीपल एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द कम्युनिटी यू आर लिविंग. वो आप पे ही तो डिपेंडेंट है एट द एंड, तो उन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है. Next is reduce the use of paper. So Mamta is my motivation in that. So Mamta is doing this conference paperless. Kudos to her great effort. If she can, we all can. Use paper wisely. Ebooks. Guys, try to make your own paper. Buy recycled paper. Read newspaper online. ऑनलाइन में आप 10 न्यूज़पेपर्स एक साथ पढ़ सकते हैं. कोई जरूरत ही नहीं है घर पे आपको न्यूज़पेपर मंगवाने की, और वो जब बहुत सारा इकट्ठे हो जाएं फिर कबाड़ी के पास जाकर के उसे बेचने की जरूरत नहीं. तो कागज जितना बचा सकते हैं, जितना कम हम कागज अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें, उतना बचाना है. तो ऑनलाइन पढ़िए. पेपर बिल्स स्ट्रिक्ट नो. आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन है, सो पे बिल्स ऑनलाइन. पेपर बैग्स स्ट्रिक्ट नो, क्योंकि बहुत जल्दी फट जाता है. सो यूज क्लोथ बैग्स इंस्टेड. नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स का उसमें उपयोग करते हैं हम. सो एंड इट्स क्वाइट डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट. सो मेनी गारमेंट्स जिस पे कंपनीज लेबल तो लगा लेती हैं ड्राई क्लीनिंग का, लेकिन वो वास्तविकता में हम आसानी से घर में धो सकते हैं. आप सिंपल एक कपड़े का चेक कर सकते हैं घर में. अगर आप आसानी से उसे चेक करिए, अगर आप धो सकते हैं तो प्लीज घर में किसी भी सॉफ्ट डिटर्जेंट यूज करके आप उसे घर में धोइए. कोई जरूरत नहीं है महंगे ड्राई क्लीनिंग करवाने की. उससे आपका पैसा तो सेव करेंगे ही, साथ साथ पर्यावरण को भी हार्मफुल केमिकल से बचाएंगे. सो ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन. Use natural cleansing agents at home rather than using harmful chemicals. Baking soda can be used for a variety of purposes, like cleaning floors, sinks, etc. Vinegar, excellent for glass cleaning. Lemon juice makes an excellent freshener. Vinegar, lemon and water, it makes a great all-purpose household cleaner. तो क्यों महंगे केमिकल्स ला करके उनसे हमें घर साफ करना है, जब हम इन सिंपल चीजों से अपने घर को साफ सुथरा बना सकते हैं. So there's no need to use harmful cleaners, and actually you will do good to your family, your home and environment. और सबसे जो important बात है वो है teach kids to care for the world. Teach them the benefits of green living. Educate them to save this beautiful planet. जो भी आप चीजें कर रहे हैं या अपना रहे हैं, अपने बच्चों को उनमें कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उन चीजों को अभी से सीखे, उनके फ्यूचर में अपनाएं. तभी तो वो अपनी जनरेशन को देंगे और आगे ये चीजें कैरी ऑन होती जाएंगी. Educate others. This involves sharing your knowledge and enthusiasm for green living with others and inspiring them to make changes in their own lives. Share all your learnings of ISTTP-6 with others and educate them. You can write all these practices on a whiteboard at your home. क्योंकि हम भूल जाते हैं. बहुत सिंपल बात है, लेक्चर सुना, कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगे. उसके लिए क्या, उसके लिए हम एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक घर में व्हाइट बोर्ड पे आप जो चीजें आपको इनिशियली चेंज करनी है, कुछ चीजें आप इनमें से डेफिनेटली करते रहे हैं और कुछ चीजें आपने अभी जरूर सोची होगी सुन करके कि हाँ आप ये अपनाना चाहेंगे, उन्हें लिखिए, एक लिस्ट बनाइए और सिंपल व्हाइट बोर्ड पे रखिए, ताकि रात दिन आप घर में उन्हें बार बार पढ़ते रहें. अगर आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये खुद अपना पाएंगे. जो बच्चे घर में हैं, जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उन्हें देखेंगे और नॉलेज आप तक नहीं रहेगी, दूसरों तक पहुंचेगी.
सो मैंने कोशिश की आज के lecture में कि बहुत छोटी-छोटी स्टेप्स और बहुत छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस जो कि हम कर भी रहे हैं और आगे हमें करनी है, वो आपके साथ डिस्कस करूं। बेसिकली ग्रीन लिविंग का जो एक कंसेप्ट है, मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करना चाहती थी और आप तक पहुंचाना चाहती थी, जिससे ये बिल्कुल हमारे दिमाग में ना रहे कि ग्रीन लिविंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल है या बहुत कॉस्टली है या अपनाना इसे बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लेकिन एक बात और हमें सोचनी है कि ये नहीं सोचना है कि इस प्लेनेट को बचाना किसी और की जिम्मेदारी है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी और हम सबको मिलकर ही इसे करना है। और आज और अभी से ही हमें शुरुआत करनी है। So in the end, I would conclude by saying that by incorporating these practices into our daily lives, we can help create a sustainable and environment friendly future. I would end with a quote by Kira Simpson. We can sit back, do nothing, and watch our planet be destroyed. Or we can take action, become advocates, and start making lifestyle choices which are kinder to people and the planet. So thank you so much. Thank you so much for listening. I hope कि आप इन सब simple practices को अपनाएंगे. So enjoy your green living. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, Mamta. Uh, can I have a better camera, please? A bit, yeah. Sudha, before saying anything to you, there is a there writ- written fact in the chat box. Someone has written, "Ma'am, you simply rock." Sudha, ma'am, it's for you. In the chat box, someone has written, "Ma'am, you simply rock." So, Sudha ma'am, words are just inadequate to thank you. The way you have explained development, the way you have told greener living, the way you have said reduce, reuse, and recycle. I don't think so anyone else could have done that. And today, your presence and your lecture depicts the success of ISTTP 6. You have told us that how we can contribute. Like I always say कि think globally, work locally. हम सोचे दुनिया की और करे खुद के हाथ से, तभी पर्यावरण बचेगा. सुधा मैम, आपने जो प्रैक्टिसेस बताई है कि क्लोथ बैग हमें यूज करना चाहिए, देन वी शुड जॉइन अ फ्रेंड्स कार इन वन डे. वी शुड हैव अ 1 0 वेस्ट डे. क्या हम एक ऐसा दिन कर सकते हैं कि उस दिन हम कोई वेस्ट ना करें, हम कोई गाड़ी ना चलाएं? So the way you have explained, I think it's amazing. And from the organizers and from my bottom of my heart, I thank you for being with us. You are simply amazing. Thank you so much. And we look forward to have you more in our future programs. You have always been one of the organizers, yes, but today you were as a keynote speaker, so I just wanted to thank you. Thank you so much. You are just amazing. So I'm moving ahead and एक चीज से मैं शुरू करना चाहूंगी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट को माने तो भारत की गंगा और यमुना नदियां दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में को में शुमार की जाती हैं. और एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर भारत देश के अंदर है. So, I am now going to present in front of you pure toxicology, because since I'm an environmental toxicologist, as you all know, can I have closed the chat box, please? So I'm going to present in front of you a pure toxicological studies. So can I have my slides, please? Slides.
मैं खड़े होकर बोल लूं शीतल, मेरे से बैठ के टॉक्सिकोलॉजी नहीं बोली जाएगी. आई नीड टू स्टैंड. आई हैव दैट रश इन मी. मुझे इसको छोटा कर दो, मुझे पार्टिसिपेंट्स दिखने चाहिए ना. Can I have the screen? Can I have that, Sheetal? No, I want my this should be visible. My slides to be visible. No, what I want is कि मुझे साइड में अपने व्यूवर्स दिखते रहे, बस इतना चाहिए मुझे. स्लाइड्स पूरी ना भी दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट नीड स्लाइड्स दैट मच टू स्पीक. स्लाइड शो. Okay. While they are doing, I will pick up some things from Sudha ma'am. She very wisely said कि जब भी हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके पीछे लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ते हैं. एक्चुअली मैं भी नहीं पढ़ती, because we all are so worked up that हमें इतना टाइम ही नहीं होता. That means हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम है पर अपने वेल बींग होने के लिए टाइम नहीं है. मतलब हमें अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए टाइम नहीं है. वहीं से मैं उस चीज को पिक करती हूँ और वहीं पे मैं आपको लेकर जाती हूँ कि क्योंकि मैं एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ और बेसिकली मैं पेस्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ. तो मेरी जो सारी स्टडीज हैं आज, वो सारी पेस्टिसाइड मॉनिटरिंग स्टडीज हैं जो 2 सिटीज में करी गई, एक बीकानेर में और एक जयपुर में. एक बीकानेर में और एक जयपुर में. शशि को बोल तो ज्वाइन कर. एक बीकानेर में और एक जयपुर में. और इन सारी स्टडीज में हमने सैंपल्स को कलेक्ट किया और सैंपल्स को हमने बहुत रैंडमली कलेक्ट किया. रैंडमली कलेक्ट करने के बाद हमने उनको थ्रू गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ एसेस किया. एसेस करने के बाद हमने उनके जो रिजल्ट्स आए थे उनको ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और डब्ल्यूएचओ की जो परमिसिबल लिमिट्स हैं उनके ऊपर हमने उनको कोरिलेट किया. बहुत ही दुख के साथ मैं ये बता सकती हूँ आपको, और बहुत ही डिजास्टर्स थिंकिंग के साथ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो ईपीए के परमिसिबल लिमिट से बहुत 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 ज्यादा थे. कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? Actually this is the study where I will be talking about the pesticide contamination of the mother's milk. बट उस पर जाने से पहले मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि वाई ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स एंड वाई ऑर्गेनोहैलोजेंस, क्यों ये इतने बदनाम केमिकल्स हैं, क्यों किस कारण से हम इतना ज्यादा इनसे डरते हैं. कि DDT has been banned everywhere in the world, BHC has been banned, Gamexin has been banned, Linden has been banned, endosulfan has been banned, Aldrin has been banned, Dialdrin has been banned. So why? What is the reason behind it? The reason behind this is only 2 things: bioaccumulations and biomagnifications. Bioaccumulation क्या होता है? अगर एक पानी के अंदर हम 5 ppm पेस्टिसाइड को डाल दें, सपोज आई टेक अ एक्वाकल्चर और उसमें मैं 5 ppm DDT डाल देती हूँ और मैं उसमें एक फिश को छोड़ देती हूँ. वो फिश के अंदर, क्योंकि फिश के अंदर फैट होता है और ये सारे कंपाउंड्स फैट सॉल्युबल होते हैं. यहाँ पे मैं एक और क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ कि जिस भी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग होती है वो कंपाउंड हर लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल होता है. सो ये वो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 4-4, 5-5 बेंजीन रिंग्स होती हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम खतरों के खिलाड़ी बने हुए इस टाइम पे और हम उस पेस्टिसाइड को खुले आम अपने पर्यावरण में डाल रहे हैं. और एक पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ कभी 450 साल है, किसी की 850 साल है, किसी की तो हजारों में है. तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी. जब मैंने उस फिश को उस पानी में छोड़ा क्योंकि उसके अंदर फैट था, वो 10 ppm हो गया. फिर मैंने उसमें एक बड़ी मछली को छोड़ा, वो 15 ppm हो गया. मैंने उससे बड़ी मछली को छोड़ा, वो 20 ppm हो गया. और उस मछली को किसने खाया? इंसान ने. इंसान के अंदर वो कितना गया? 25 ppm.
सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कंपाउंड्स इतने हार्मफुल हैं कि 5 ppm से बढ़ते बढ़ते इंसान तक पहुंचते होते 25 ppm हो जाते हैं. सो दिस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन. और बायोमैग्निफिकेशन कैसे हुआ? जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, when there is a movement of a pesticide and there's an increase in the amount. So these are known as PBTs, persistent organic pollutants, that is POPs. And what is PBTs? Persistent bioaccumulating toxic substances. So all the pesticides do fall in the category of PBTs and POPs. So this is a kind of organic pollution which we are going through. So I always start my like beginning में मैंने सुबह आपको बोला था कि एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ और वो मेरी पीएचडी थीसिस का पहला पेज भी है. पैरासेल्सस ने बहुत अच्छे से कहा था, यू कैन किल अ पर्सन बाय सॉल्ट, जस्ट डिसाइड द राइट डोज. तो हमने अब ये बीड़ा उठा रखा है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी मरने की डोज क्या होगी. दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन द एनवायरमेंट, कि हमें कैसे मरना है ये डिसाइड कर रहे हैं हम आज की तारीख में. और हम उतना ही टॉक्सिक मटेरियल इस पर्यावरण में डाले जा रहे हैं, चाहे वो ओजो मतलब CFCs हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स को खराब करता है. एंड देन वी क्राई, देन वी टॉक देयर इज अ क्लाइमेट चेंज. यस, देयर इज अ क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज विल गो ऑन. जब तक हम एसी यूज करेंगे, जब तक हम फ्रिज यूज करेंगे, जब तक हम गाड़ियां चलाएंगे, हम ओजोन लेयर का सत्यानाश करते जाएंगे. So let's move ahead. Now let me confine myself to OCPs. OCPs is what? Organochlorine pesticides. Organochlorine pesticides are those pesticides. अगर हम 60s में चले जाएं तो आपको ध्यान होगा हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन. और ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये किया था कि हमारी जो यील्ड थी, हमारी जो फसल थी, उसका जो प्रोडक्शन था उसको एकदम से बढ़ा दिया था. उसने हमें भूखमरी को फाइट करने में हेल्प करी थी. पर उसी वक्त एक साइंटिस्ट हुआ करती थी जो मेरी हीरो है, जिनको मैं हमेशा अपना हीरो बोलती हूँ. हर नेम वाज रकेल कार्सन. रकेल कार्सन वो व्यक्ति थी या वो साइंटिस्ट थी जिन्होंने पहली बार ये रिपोर्ट किया कि डीडीटी बॉडी के अंदर जाता है, डिपॉजिट होता है, और क्योंकि ये पोटेंट कार्सिनोजेंस है, म्यूटाजन है और टेराटोजन है, तो वी कैन इमेजिन what is the harm it is giving to us. So she reported that the national bird, that is bald eagle, why in Georgia their number is falling. She reported that these DDTs, they get into the body of the bald eagle, they fight or they interfere with the shell formation of the eggs of the eagle. While the shells are weak, when the bald eagle used to sit on those eggs, they used to break and there are no newborns. So from there, she's the one who started talking about organochlorine pesticides are very harmful. Pesticide, particularly the persistent type, gets translocated into air, water, and soil system from the point of initial application, thus endangering the normal functioning of non-target organisms. Can I have the second slide, please? So, if we go to Antarctica, or if we take water of Antarctica, we find that DDT is there. That means if we spray pesticide in America or anywhere else, it gets translocated through air, water, and soil to the vast places. And since the half-life is very high, then it is very difficult to stop the translocation of these pesticides. Can I, Sheetal, can I have this that half kind of a thing? मुझे इससे पता ही नहीं लग रहा कितने लोग हैं.
मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने व्यूअर्स को, हाँ, आई थिंक इट्स बेटर, आई थिंक इट मेक्स सेंस, या आई वांट दिस, मेरी स्लाइड्स दिखा दो बस मुझे, कैन आई हैव द स्लाइड्स? वो हाफ इनटू नहीं आ रही, पीडीएफ में नहीं आ रही। वैसे Okay. नजर आ रहे हो? हाँ, वैसे नजर आ रहे हो? वैसे प्रॉपर हाफ चल रही है। हाफ चलाओ, देखो कैसे दिख रहा है मुझे ना, आई वांट टू टॉक टू द पीपल, मुझे देखना है लोगों को, so it's very difficult if I'm not seeing my viewers. Okay, so now I take you to my studies, and one more thing which I always talk, कि if we go to the कि अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं या हम किसी भी, अभी सुधा कहा था कि हम दाल खरीदते हैं तो हम ऑर्गेनिक, ओके फाइन, तो हम देखते हैं कि जो देखने में अच्छा लगती है चीज, डेफिनेटली हम उसी चीज को पसंद करते हैं जो हमें देखने में अच्छी लगती है। अगर खाना बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है परोस के तो हम उसे खाना पसंद करेंगे, बट इट इज shabbily done, we will not have it. So if we go to the market and we buy groceries or we buy vegetables or we buy fruits, we buy only those things which are best looking. Like if I go to the market and I have to buy an apple, I'll see the red one, the shining one. If I have to buy an orange, I will look something which is very shiny and which is very orange, colorful. And if I'm buying good pulses, then they should look bit bigger and they should be shining. Welcome to the world of the pesticides. These are the cosmetic pesticides which are sprayed while it is blooming. And at that time, while blooming, when we put these pesticides and we spray, it will improve the looks of the pesticides. I will ask you, my dear friends, have you ever seen these kind of vegetables before in your life? Such big, such big cauliflowers, such big tomatoes, or maybe maybe all vegetables are available all the year. But there was time when I remember when my mom used to say ki, this vegetable is for winters and this vegetable is for summers and this vegetable is for rains. But we don't have that discrimination anymore. I can see watermelon throughout the year. I can see carrots throughout the year. How come? Because we are playing with the climate of our world. Simple. So whatever we are eating, whatever we are drinking, whatever we are breathing, whatever we are working on has a contamination of organochlorine pesticides. Welcome to the world of pesticides. So here I take you to my studies where we have selected 101 pregnant women. We have worked on the human samples, that is further terrifying study efforts. So we have selected 101 pregnant women who are admitted to the Janana Hospital and Mahila Chikitsalaya, which is attached to the Department of Obstetrics and Gynecology, SMS Medical College, Jaipur, India, and two private hospitals, Sanjeevani Hospital and Meera Hospital, Bunny Park, Jaipur. They are included in the present study. And in general, they didn't have any history of any occupational or accidental exposure to pesticides. So there were 4 samples were collected from the pregnant woman. We collected the blood before the parturition. And during the parturition, we collected placenta and the cord blood. And after 4th day or the 5th day, we have collected the mother's blood. Mother's blood, not, sorry, mother's milk. And after 40 days, to follow up study mother's blood. So one woman were used to collect 5 samples in one go. So the here I'm talking about the milk. So the mother's milk, which was we collected on the 3rd day, was extracted by a methodology which was given by Taki and his co-workers in 1983. We did little more modifications depending upon the prevailing laboratory conditions. The calculations are based on the biological statistics and values are expressed as mean plus minus standard error. The difference in the pesticide residue levels between different groups was analyzed with the help of a student t-test. Significance between
The residue levels of different groups were judged at 5 and 1% level. Can I have the next slide, please? So this is the horrifying scenario. And one more thing I would like to talk to you here is, before I go into this, our human body has a tendency of throwing off the toxicants which flow in our blood. So since the pesticides, organochlorine pesticides, they are like fat soluble, and so the mother has a tendency of throwing off these pesticides through the milk. When we analyzed gamma BSC, alpha BHC, beta BSC, which we call a hexachlorocyclohexane, heptachlor, aldrin, heptachloroepoxide, dichlorodiaphenyl ethane, dichlorodiaphenyl DDD, and difluorodiphenyl ethane, total SCH, total heptachlor, and total DDT. I would like to bring to your notice, we don't have that na pointer. Okay, let's go to the table number 3. Table number 3, the number, no, I'm talking about table number 3. Slide नीचे रखो, slide नीचे रखो, वही slide रखो. Yeah. So if we go and see the number of positive samples, 97, 77, 74, 60, 87, 65, 94, 46, 75, and for total HCH is 100%, 87 and 97. These are the percent positive sample. That means every sample of the mother's milk was contaminated by one or the other kind of pesticides. And if I take you to the range in parts per million, it is 0.5, 0.3, 1.08, 259. One of the sample has 259, 1.2, 8.8, 2.2, 6.1, 1.4, 1.2. And if we go to total heptachlor, it is 260.3. And if we go to total DDT, it is 6.7. So that, my dear friends, can we say that mother's milk is not fit for drinking? Will I say we should ask mothers not to feed their babies? Can we say we should give all the children preserved milk because it has got less fat than mother's milk? क्या हम आज ये कह सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ डब्बा बंद दूध पिलाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम होती है? बीच में, if you remember, there was a company whose cold drink was found to be contaminated with DDT, and that company was blacklisted, saying that कि इस cold drink में तो DDT है, इसको नहीं पीना है हमें. But can I ask you, do you drink the water in the house? It is DDT free? No, it's not. So the story starts from here that we are not killing ourselves slowly. We are also slowly killing our future generations. Because the child who is born, first it is exposed in the mother's blood, mother's womb by mother's blood, because it has a pesticide. When it is born, then mothers will feed their child with their milk. Again, the child is exposed second time. And by the time the child is eating the hard food or the child is eating solid food, the third time child is going to get exposed to pesticides. So we are not dying, we are killing our future generations too. हम खुद तो मर ही नहीं रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी मार रहे हैं. So it's a high time for us to think for our environment. Next slide, please. Next slide. So if we talk of results and the discussions, and यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. हमने एक फॉलोअप स्टडी और करी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमने 40वें दिन भी मदर्स का ब्लड कलेक्ट किया था, और ये इंसान की बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर कोई भी टॉक्सिकेंट है वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है. तो हम लोगों ने जब इस स्टडी को कंडक्ट किया था, तब जब हमने इसको टेस्ट किया तो हमें ये पता लगा कि बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स मदर अपने मिल्क के थ्रू बाहर फेंक रही हैं और उसको चाइल्ड इज कंज्यूमिंग. So what we did, we collected the blood sample before the parturition
एंड आफ्टर दैट 40 डेज, जब उसने 40 डेज अपने बच्चे को फीड कर लिया, उसके बाद हमने फिर से उसका सैंपल लिया और उसे टेस्ट किया. एंड कैन यू इमेजिन, there was at least 20% fall in the toxicants in the mother's blood. So this is again a horrifying study which suggests that it's a high time for us to think and make our farmers educate that how to use pesticides and how to work on them. We always say कि हमें अपने आप को बचाना चाहिए, एंड सुधा मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें खुद उगा के खाना चाहिए. यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे फार्मर्स है, either they are educated, ना उनको कोई तरीका सिखाया जाता है, ना उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि पेस्टिसाइड्स को कैसे यूज करना है. अगर मैं अलवर के आसपास भी जाती हूँ कभी, या मैं जयपुर के आसपास मैंने देखा, या मैंने बीकानेर के आसपास देखा, बीकानेर के आसपास तो कि बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर कुछ फसलें वहां भी होती हैं, तो फार्मर्स क्या करेंगे, एक झोले में पेस्टिसाइड को डाल लेंगे और उसको हाथ से लेके इस तरह से फेंकेंगे, विच इज वेरी डेंजरस. बिकॉज हम लोग, अगर हम बात करें साइंटिस्ट की जैसे कि 1 ppm, अब यहाँ ppm तो छोड़ दीजिए, हाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कितना पेस्टिसाइड हमारे फार्मर्स फेंक रहे हैं. तो इट इज, if we have to save our environment, we cannot stop agriculture. Agriculture has to go on if man has to live. It's a very high time for us to make our farmers educate, understand, and take safety measures for their own selves, and then use the pesticides. So all the milk samples were analyzed, were found to be contaminated by the one or the other kind of insecticides. Mean concentration of total HCl equivalent, total heptachlor equivalent, and total DDT equivalent were found to be 0.02, 4.3, and 0.29 ppm respectively. Among isomers of HCH, gamma, alpha LCH were detected more frequently, found in the maximum concentration, and constituted about 44% of total HCH concentration. Gamma isomer of SCH, which was responsible for the insecticidal action of the compound, contributed about 15% of total SCH concentration. And this is another very horrifying thing. The gamma isomer of SCH, which is responsible for the insecticidal action of compound, contributed only 15% of total HCH concentration. Relatively high concentration of para-para DDD and DDE, which constituted about 48% and 34% of total DDT concentration respectively, suggests the chronic exposure of DDT. That means if DDT gets in the body and get metabolized, DDT half-life is lesser than DDD and DDE. So the more concentration of DDD and DDE are found, it is quite clear from the foregoing discussion that the levels of DDT resembles the pattern of different states, while HCS level were relatively high in Jaipur samples. So when we compared, we made the chart, and very few reports are available on the human samples. We found that DDT was nearly same, but HCS level were very high in Jaipur samples. Now, how we describe this? Since the annual use of DDT and HCH is around 10,000 and 25,000 tons respectively in India, a study in concentration, an upward trend in HCH concentration is most likely. यहाँ हम ये बात, उसको नीचे रखें, हम ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एनुअल यूज ऑफ डीडीटी और एचसीएच तो देखें, तो एचसीएच ज्यादा यूज होता है और डीडीटी कम यूज होता है. इसी कारण से हमें सैंपल्स के अंदर ज्यादा एचसीएच मिला और कम डीडीटी मिला. तो दिस इज इन कोरिलेशन with the reports which are given by Government of India. So this is a table 2 in which I tried and compiled organochlorine pesticide residues in human beings from the different parts of India. अगर अहमदाबाद की बात करें, तो Jani et al. In 1988 reported 6.5 total DDT, and they did not report HCH in the samples. And in Bangalore in 1985, it is 0.05 DDT and 0.014
This is all in parts per million, and it was given by Ramakrishnan et al. In 1985. If we go to Bombay, it is 0.2 and zero point 0.5, again Ramakrishnan et al. If we go to Calcutta, it is 0.1, zero point 0.1 and zero point 0.03. If we go in Delhi in 1986, it's zero point 0.1 and total HCH was not detected. If we go to Karnal in 1985, it is 0.1 and 0.03. In Lucknow, it is in 1980 it is 0.5 and 0.2, and again Lucknow in 1984, 0.1 and 0.1 again, and again Lucknow in 1985 it is 0.1 and 0.1. Actually, Dr. Siddiqui and Dr. Saxena, they are the people from where I picked up this study. These are the scientists who were working at ITRC Lucknow, Industrial Toxicology Research Center, Lucknow, from where I got my training. And these are the people whom I worked with actually. And they are the pioneers in the environmental toxicology in India. And I really salute these people because Dr. Saxena and Dr. Siddiqui in 1982-83, long back, they reported from Lucknow, the number of human samples are contaminated with pesticides. Next, please. This is something we should all understand that newborns जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल humans का miniature form नहीं होते हैं. They are not small adults because they differ morphologically, physiologically, biochemically from adults. Therefore, a neonate would respond differently to pesticides and other agents. What is more seriously is to be considered here is that synergic action of the dose effect relationship of DDT, HCH, aldrin, heptacol, chlor, which are simultaneously present. This is very horrifying statement. I want every environmentalist to kindly go through this line. कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो दे आर नॉट लाइक स्मॉल अडल्ट्स, वो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं. और जो हमें चीज यहाँ सोचने वाली बात है, जो हमें जिसके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब इतने सारे पेस्टिसाइड साथ में मिल जाते हैं और वो एक साथ जब एक्शन करते हैं तो जो एक कॉकटेल बनती है उसका क्या रिजल्ट आता होगा. इट इज नॉट वन पेस्टिसाइड विच इज वर्किंग. It is not one pesticide which is working, but it is something which is together what they are making. It can be concluded that the magnitude of pollution is quantitatively enough to contaminate the food, environment, and the pesticide reach the human body through various sources, mainly by the absorption from the GIT, that is gastrointestinal tract, through contaminated food chain, are circulated in blood, stored in milk, and secreted during the lactation, resulting in sufficient neonatal intake. What we conclude out of this study is that कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉल्यूशन है, जो भी हमारा पॉल्यूशन अभी हो रहा है, विच इज एयर, वाटर एंड सॉइल, वो इतना ज्यादा है कि वो हमारे फूड के द्वारा और हमारे पर्यावरण के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वो हम बॉडी के अंदर जाता है, वुमेन के अंदर, और वहां से वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, मिल्क के अंदर स्टोर होता है, और जब मदर्स फीड करती हैं अपने बेबी को, इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ नियोनेटल इनटेक. So it's a very horrifying statement. Let's move to the next slide, please. What I want to talk about कि इतना कुछ हमने पेस्टिसाइड के बारे में बात करी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतने खतरनाक क्यों हैं. ये पेस्टिसाइड्स जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैं वो इतने खतरनाक क्यों हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. they are reported to be, these pesticides जो हैं वो कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है, टेराटोजेनिक है, इम्यूनोसप्रेसिव है, ये एंडोक्राइन डिसफंक्शन को इंड्यूस करते हैं, हाई ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, वो ग्रोथ को रोकते हैं, दे आर ग्रोथ डिप्रेसेंट, दे इंड्यूस सेवरल साइकोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज इन एडल्ट स्टेजेस. मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन सबको इफेक्ट करते हैं. They are also reported to be associated with abortions, premature deliveries,
Stillbirths, low birth weight, consequences are obvious on the mother and the developing baby. It poses various problems of the management of neonatal nutrition and health. It calls for suggestion like special care in the nutrition and in the environment of the mother throughout the life, and especially during pregnancy and the lactation. It would be advisable for women to avoid the consumption of fatty foodstuffs in heavily polluted working environment. It is also advisable for a woman to avoid use of insecticides for the household purposes. It also reflects there is a urgent need to develop less or non-persistent, more or total biodegradable pesticides and other means by which we can reduce the environmental pollution by the pesticides, which is not posing the risk to the human health but threatening our future generations also. So I would like to tell everyone that it's a high time for us to look for something to save at least a woman, because she is the one who is taking our generation forward. Take care of her during pregnancy and throughout the life. Keep her away from the pesticides so at least babies are not exposed to pesticides. But then the life is important for men, women, and children, all three. So we should look into something that we should have some kind of pesticides which are non-persistent like organochlorines, which are biodegradable, not like non-biodegradable degradable like OCPs, or something which do not contaminate environment. We should look for those pesticides because as of now, our environment is like that. We need to have a lot of grains because of the population blast. We cannot let go humans into hunger. We cannot leave people hungry. So we ought to have food for every mouth. We ought to have food for every mouth, and we for that we have to grow. We have to grow. We have to grow our wheat and everything, whatever our food. We have to grow our food. So we need to look for some pesticides which are less persistent. And this research was done with the help of the financial assistance which was provided by Indian Council of Medical Research, New Delhi, which is gratefully acknowledged. And I really thank you all. You have been wonderful audience. Thank you so much. Can I have the next piece, please? Can I have the camera, please? Dr. Ruchi Sharma. Just check Dr. Ruchi Sharma is there. Can I have Dr. Ruchi Sharma? Can I have some questions, please? कुछ questions हैं उसमें देखो क्या है. Dr. Ruchi Sharma is there. Hi, Dr. Ruchi Sharma. Sorry if I took your time because um, there is a question. I'll just stay. Very. मुझे chat box खोल दो. Chat box. बहुत सुंदर. ठीक है. Very nice. Okay. There is a question regarding non-vegetarians. Yes. Actually, what happens, as I have said, it's okay. Close the chat box, please. Actually, Dr. Sharma, just 2 minutes. Just 2 minutes, Dr. Sharma. Actually, what happens कि मैं जैसे शुरू से आपको बता रही थी कि these pesticides are fat soluble. तो एक प्रोसेस होता है बायोमैग्निफिकेशन का. बायोमैग्निफिकेशन मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में अगर वो चीज ट्रांसफर होती है तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसका नुकसान बढ़ जाता है, उसका हार्म बढ़ जाता है. सो अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है कि नॉन वेजिटेरियन खाने को रोका जाए, वो इसी कारण से चल रहा है कि क्योंकि जो प्लांट्स के अंदर फैट नहीं होता बट एनिमल्स के अंदर फैट होता है. तो एनिमल्स के अंदर जो वो ग्रेन खाते हैं या जो घास वो खाते हैं, जो घास पे अगर 5 ppm है तो उनके अंदर जाके वो 10 ppm हो जाता है. तो जब उस एनिमल को ह्यूमन खाता है या दूसरा बड़ा जानवर खाता है तो वो बहुत ज्यादा उससे एक्सपोज होते हैं. अगर वो घास में 5 था तो उसके अंदर 10 था तो उसके अंदर जाके वो 15 हो जाएगा. सो दैट्स द रीजन वी से कि प्रेग्नेंट वुमेन को नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए.
सो देयर इज एक मुहिम चल रही है अभी दुनिया के अंदर कि शाकाहारी बनिए, वो इसी कारण से बन रही है बिकॉज दीज कंपाउंड्स दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। इनके हाँ मैंने आपको लिस्ट कर दिए थे, तो दैट इज द रीजन आई सेड नॉन वेजिटेरियन। सो वी हैव अनदर स्पीकर विद अस, डॉक्टर रुचि शर्मा। Can I have Dr. Ji? Ma'am, you can start with the deliberation because I will introduce you after your deliberation. So you can start with your deliberation. Yeah, sure. Thank you so much, Dr. Mamta Sharma. Uh, am I audible? Yes, ma'am. I can see you and you are very much visible, ma'am. Yeah, okay. That was a really very wonderful presentation, Dr. Mamta. And it was really, I was listening to it and it was like it should keep on going. I thought that I should not give my presentation. I should say, you continue. No. You are a wonderful presenter. Thank you. But thank you so much. And being a toxicologist, मैं बहुत ज़्यादा passionate हूँ अपने work के प्रति बस. Thank you. So can I start with my presentation now? Yes, ma'am. Please go ahead. Okay, I'm going to share the slides. A Yeah. very good afternoon to each and everyone present here. I'm thankful to Dr. Mamta Sharma for inviting me as a speaker here in this session, and looking forward for a good discussion, rather I would say, when we are talking about the green living. Now I'm going to share my slides. Just I need the confirmation that if in case you're not able to see the slides moving, then kindly let me know. Okay, we'll do that. Ma'am, can I introduce first? Yeah, sure. So, Dr. Ruchi Sharma is currently working as a professor and director at Jagran Lake City University, Bhopal. She has a work experience of 20 years in the field of education, corporate and social work with national as well as international volunteer organizations. Dr. Sharma has completed her post-graduation in social work, sociology and psychology with PGDHRD, PGDBM IRMA and honors diploma in computers. She has done PhD in sociology from Bakatullah University, Bhopal. She has published research paper in reputed national international journals and presented papers in conferences. Her research interest areas are sustainable development, social inclusion, sociology of organizational culture. Her recent publications include strategic framework, roadmap for communities, applicants, and evidence in constrained environment, a research paper published by Springer in Nature 2021. That's amazing. Shifting paradigms in human resource management while striving for service excellence in the tourism industry, published by Springer Nature Switzerland in 2021. Heartiest congratulations, ma'am. और बहुत अच्छा लगता है मैम आपको देखकर हमेशा आप तो you are like a family to us and people like you who are so good in their field who have really achieved something in their life they join us, you know, it is very motivating for us. आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है मैडम. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mamta. It is really, even I look forward for your sessions and these conferences because they are like glucose for me. They keep on, attending them or coming here. It's just more leads to more learning. A very good afternoon to all the audiences here. Now I'm going to share my slides. Today, I'm going to talk with you on greener living, which leads to our sustainable living. I hope you are able to see the slides. Are the slides visible? Okay, just kindly let me know if the
you are able to see the second slide, because I just want to know, otherwise many a times it happen कि एक ही slide पे रह जाता है presentation, नीचे की slides नहीं दिखती हैं. So just let me know अगर आपको आगे की slides नहीं दिख रही हैं तो मुझे बता दीजिएगा. So starting with the presentation on the topic, why I have chosen this, as it is related to the theme of our international conference and this particular session when we are talking about. So green living leads to the sustainable living. कई बार हम देखते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग जो हम जैसे हम सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं, इट मींस मीटिंग आवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो यूज हुआ वो ब्रिटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उसको डिफाइन किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So many a times it happens that when we are living our life, and as we progress, live in the society, thinking of our own need, fulfillment of our own need, we start abusing the resources which are all around us, that is the natural resources. And by adopting sustainable practices, do you know, छोटी सी ही चाहे क्यों नहीं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, हम उसका काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिस में अगर ईच एंड एवरी ऑफिस वर्कर वो स्टेपल करना बंद करके रीयूजेबल जो पेन होते हैं, क्लिप होती है, पेपर क्लिप होता है, उसको अगर यूज करने लगे तो उसके कारण कितना सारा स्टील का प्रोडक्शन जो है उसको हम होने से बचा पाएंगे. और ये एक साल में काफी अनेक धीरे धीरे करके काफी बचा पाएंगे हम इसको. सो द पीपल दोज हु आर अवेयर अबाउट दीज प्रैक्टिसेस, दे adopt it in their daily life and they choose to follow their eco-friendly path. So the lifestyle is commonly known as green living or sustainable living. So the green living involves reducing one's carbon footprint, or more generally making as small an impact on the natural environment as possible. So it happens that many a times our हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा हमारा, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हम प्लास्टिक नहीं यूज करते, प्लास्टिक का कैरी बैग नहीं ले जा रहे हैं, पेपर बैग, अपना होम घर का सिला हुआ बैग लेके जा रहे हैं, सो क्लॉथ बैग लेके जा रहे हैं. तो हमारे इस छोटे से एक्ट से क्या एनवायरनमेंट पे कुछ असर होगा? हम सिर्फ एक ही दो बैग लेके जा रहे हैं, हम अकेले इंसान क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ अगर एक इंसान सोच ले तो वो काफी सारी चीजों का बदलाव किया जा सकता है सोसाइटी में. We all know that there are the 3 pillars of sustainability. Now many a times it comes that ये जो 3 पिलर हैं सस्टेनेबिलिटी के, ये क्या है? तो हम लोग ने कई बार पढ़ा है कि इसके काफी रिसर्च हुई है, इसमें बताया गया है कि these 3 pillars of sustainability are environment, economic, social. And later on other pillars also got added, like for example policy framework got added, then peace got added in it. So here in my presentation I will be going to focus on the 3 pillars of sustainability. So before moving कि green living क्या है और वो कैसे हमें sustainable living तक लेके जाती है, we need to understand these 3 pillars. So the first pillar is the environmental sustainability, which is the ecological integrity. It needs to be maintained as all of Earth's environmental systems are kept in balance, while natural resources within them are consumed by humans at a rate where they are able to replenish themselves. Coming to the economic sustainability, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें उनका सस्टेनेबल वे में यूज करना है जिससे आगे की जनरेशन को भी वो मिलता रहे. When we are talking about the economic sustainability, it refers to the human communities across the globe are able to maintain their independence and have access to the resources that they require, financial and other, to meet their needs. Economic systems are intact and activities are available to everyone, जैसे कि secure source of livelihood हो गया. So economic sustainability is also necessary because it helps in fulfilling our basic needs of human beings. Then comes to the social sustainability. यहाँ पे हम बात करते हैं universal human rights और basic necessities की.
जिससे जहां पे हम बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी इनफ रिसोर्सेज so as to keep our family and community healthy and secure. So coming to the point कि sustainability हम क्या उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, एंड मेनी टाइम्स कई बार अनरियलिस्टिक लिस्ट जो है हम क्रिएट कर देते हैं, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो से इसको क्रिएट कर देते हैं कि थ्रू दिस वी कैन लीव द सस्टेनेबल गोल और वी कैन अचीव अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. Still most people, the crux of the sustainability is to understand that the kind of future which we are leaving for our future generation, हम किस तरह की दुनिया अपनी future generation के लिए छोड़ के जा रहे हैं. So sustainability as a value is shared by many individuals and organizations who demonstrate this value in their policies, everyday activities and behaviors. And individuals have a major role to play, which we will be going to discuss further in our slides. So, planning for green living requires a systematic, integrated approach that brings together the environmental, economic, and social goals and actions directed toward the sustainability objectives for a community. Now, जहाँ पे हम जब बात करते हैं green living की, so green living आप देख सकते हैं जैसे कि बताया गया, it is an integrated approach, मतलब it is an integration, it is not an individual approach, rather an integration जहाँ पे हम बात कर रहे हैं individual, role of community, role of society, role of law, role of other different areas which are functioning in the society, and all these when come together to make a healthy or greener planet, then we will be able to achieve the goals which we are talking about as living a good living our mother earth in good condition for our future generation. Now, before moving ahead, I just want to pause. हम future generation की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल कई बार आता है कि कल जो होगा देखा जाएगा, हमें तो आज में रहना है. Why we should worry about tomorrow? बट ऐसा नहीं है. अगर हम राइट फ्रॉम द सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारे समाज का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि इनिशियली जो सोसाइटी थी वो हंटिंग सोसाइटी थी, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस विद नेचर जो है बहुत रहता था, क्योंकि इंसान जो था वो नेचर पे ही पूरा डिपेंडेंट था. तब एग्रीकल्चर नहीं था, तब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उसकी जो भी नीड्स थी, बेसिक नीड्स थी, वो नेचर के थ्रू फुलफिल होती थी. एंड दैट वाज द वेरी, जिसे हम कह सकते हैं कि नेचर और इंसान दोनों साथ साथ में काफी अच्छे पीसफुली उनका एग्जिस्टेंस रहता था. देन केम द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चालू हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजीज आई जिससे इरिगेशन और उन्नत स्थिति में स्टार्ट हुआ, तो एग्रेरियन सोसाइटी स्टार्ट हुई. आप उसके बाद इनोवेशंस हुए, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ चले गए. उसके बाद अगेन हमने और डेवलप किया. So with the as human beings, they are blessed with brain, and if they use it for productive thing, then it works wonders or it can do marvels. So when we went towards the information society, जिसे हम कहते हैं कि हम information society में आ गए, जहाँ पे कंप्यूटर हाईटेक, आपको आज जैसे कि मैं वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, हम ऑनलाइन के थ्रू इतने अच्छे से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं. So it is about the way we are in functioning in the information society. And now we are moving toward the super smart society, जहाँ हम artificial intelligence की बात करते हैं, जहाँ हम बात करते हैं कि just एक within a second we can do wonders, we can create you can say जिसे हम कहते हैं कि हम artificial lake create कर सकते हैं, हम artificial natural sound create कर सकते हैं. So we are moving towards the smart society. But when we were moving towards this society like present, जब हम पास से आज की तरफ आए, तो उसमें हमने क्या खोया क्या पाया? हमने अनसस्टेनेबल पैटर्न यूज किए. आप देख सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन, इसके कारण ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस हुई, और ये अनसस्टेनेबल पैटर्न के कारण हुआ. Too much food is being lost or wasted in every country every day.
vast majority of the world's electronic waste is not being safely managed. मतलब हम उसको properly, उसका disposal properly नहीं कर पा रहे हैं. Progress in energy efficiency, sure, हम super smart society बन गए. We are using latest technology, latest gadgets we are using, but progress in energy efficiency needs to speed up to achieve global climate goals. 2.4 billion people, they still use inefficient and polluting cooking systems. So here we can see कि हमारी सोसाइटी में कितना डिवाइड है, रिच और पुअर का जो डिवाइड है, जो गैप है, वो कितना ज्यादा है. इवन द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड, वो कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट जो है अब हमें रिड्यूस करना चाहिए, एंड दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन रेगुलेटिंग द other countries' policies. So first, we should think about the divide between rich and poor within a country as well as among the countries. 99%, we have achieved the industrialization, urbanization, but 99% of the world's urban population breathe polluted air. आज के टाइम पे बहुत उससे कहा जाता है कि हमने ऐसा अपना सेटअप तैयार किया है एक कि जहाँ पे लोग जाकर के ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो फ्री में मिलती है, हम अब उसको पे करके उसको इनहेल करेंगे. सो दिस इज द वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, ग्रीन लिविंग, फ्यूचर जनरेशन. हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, व्हाई शुड वी वरी अबाउट फ्यूचर? इफ पास्ट में अगर ये सब ध्यान दिया जाता तो आज हम इतनी सारी क्राइसिस नहीं हमें पता हम हो रहे. कई बार होता है वी वे नॉट अवेयर अबाउट मेनी थिंग्स विच वी बिकेम अवेयर slowly and gradually. Now once we are aware, we should control these things, at least jitna control kar sakte hain. So world related, water related ecosystem, over the past 300 years, over 85% of the planet's wetlands have been lost. Can you imagine? 85% जो है वो lost है, और ये degradation जो है धीरे धीरे और ज्यादा होता जा रहा है. At current rates, अगर यही जो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट की जैसे हम बात करते हैं, अगर इसी रेट पे हम आगे बढ़ते रहे तो 2030 तक ये एस्टिमेट किया गया है कि 1.6 बिलियन पीपल विल लैक सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, 2.8 billion people will lack safely managed sanitation, and 1.9 billion people will lack basic hand hygiene facilities. So water, air, जो कि नेचर के द्वारा हमें मिलता रहा है, उस पे भी अब हमें आगे जाकर के सोचना पड़ेगा कि क्या ये मिलेगा कि नहीं. We all use smartphones, okay? हम काफी बहुत हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है इस स्मार्टफोन ने. डू यू नो दैट अ स्मार्टफोन इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. जहाँ पे हम बात करते हैं जैसे एलसीडी डिस्प्ले हो गया, आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में जो मैंने पिक्चर डाली है. एलसीडी डिस्प्ले, ग्लास, प्लास्टिक, इट इज मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, लिक्विड क्रिस्टलाइन. सर्किट बोर्ड जो रहते हैं उसमें वो कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, पैलेडियम से बनता है. जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो लिथियम मेटालिक ऑक्साइड से बनती हैं. So to make smartphones, manufacturers use precious raw materials that must be extracted and processed and consume natural resources and energy that can affect our air, land and water as well as plants and animals. एक we keep on changing our smartphones कि अभी नया लेटेस्ट अभी आ गया है ट्रेंड में, इसमें ये वाले फीचर्स नहीं, इसमें और नए फीचर्स हैं. So in spite we don't require, but still we keep on. But try it whenever you are going for the next time purchasing a new phone, just think about whether you require it, और जो आप जिसको डिस्कार्ड कर रहे हो क्या वो उसका वेस्ट, उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो पाएगा. Our window to avoid climate catastrophe is closing rapidly. Coral reefs की हम बात करें, sea level rise हो रहा है, coral reefs धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं. ड्राफ्ट्स जो है काफी जगह हमें देखने को मिल रहा है. डिजास्टर्स जहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी हमारे इंडिया में ही जोशीमठ रिसेंट एग्जाम्पल, जहाँ पे घरों में दरारें आ गई हैं, पीपल आर बीइंग टोल्ड टू वेकेट देयर हाउसेस. उनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे सेफ नहीं हो. जो लोग वहां पे रहे हैं जनरेशन से, उन्होंने क्या कभी सोचा होगा कि एक दिन हमें अपना घर, अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी? इट वॉज देयर लैंड.
Energy related carbon dioxide emissions have been increased by 6% in 2021. Although COVID के time पे थोड़ा environment control हुआ था, जो pollution हम कह रहे हैं, but again it is reaching it to its highest level. Climate finance, it falls short of $100 billion yearly commitment by developed countries. So who is responsible to threaten greener living? You can see here on the slide हम कैसे कैसे धीरे धीरे एक होमोसैपियन के रूप में आज हैं, बट जो हमने अपने आप को डेवलप किया, हमने किसके कॉस्ट पे डेवलप किया है इसको, अपना हमारा जो डेवलपमेंट है वो किसके कॉस्ट पे डेवलपमेंट है? क्या हम इसको सुपर स्मार्ट सोसाइटी बोलेंगे? वो डेवलपमेंट जो हमारे अपने आसपास जो नेचर अदर अर्थ है उसको अफेक्ट कर रहा है एडवर्सली, क्या हम उसको डेवलपमेंट भी बोलेंगे? कि आप कि एक बहुत बड़ा हम यूज करते जा रहे हैं, थ्रो करते जा रहे हैं और पोल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं, हमें अपने घरों से ही बोला जा रहा है कि आप सेफ नहीं है, आप अपना घर छोड़ करके जाएं। क्या ये सुपर स्मार्ट सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या ये डेवलपमेंट है? प्लास्टिक पोल्यूशन, चलिए हम तो सफर कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ जो स्पीशीज हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी सफर कर रहे हैं हमारे कारण। प्लास्टिक पोल्यूशन is choking the ocean. 17 more than 17 million metric tons of plastic entered the ocean in 2021, and it will be going to double or triple by 2040. So this is the future which we are moving ahead. The temperature is constantly rising, and we are seeing either a very harsh climate, either very severe cold or severe summer is there. In the process of development, 10 million hectares of forest are destroyed every year. And in this, we have depleted the natural resources. The biodiversity is largely neglected. In COVID-19 recovery spending, around 40,000 species are documented to be at risk of extinction over the coming decades. So, from how we have moved unsustainable society towards sustainable society, or from sustainable society to unsustainable society, if we are going to decrease our unsustainable way of living, then automatically we will be going to move towards the sustainable society, and where we will be going to have more availability of resources. In unsustainable society, the demand for resources is there, but if we are not using it consciously, then it will be going to affect our existence in future or our future generation. Our reliance on natural resources is increasing. It is rising over by 65% globally from 2000 to 2019. So we can see that हम इतना artificial उसके बारे में बात करते हैं कि आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, हम बना सकते हैं, नेचर को हम क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द साउंड, वी कैन क्रिएट द आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल वाटर हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट क्या हमारी डिपेंडेंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि रिसर्च ने बताया है हमें कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो जब हमारी डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आगे क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन सरवाइव कर पाएगी? So we are responsible for depleting or creating destruction in the environment. Now, who is responsible to create greener living? Again, we ourselves are responsible. So in this particular model, which after going through lots of research articles, I have developed this green living pran framework. प्राण हिंदी में वर्ड होता है प्राण, उसको मैंने वहां से कि अगर प्राण है हमारे में, हम जिंदा हैं, अगर वो प्राण ही नहीं तो हम नहीं है, ऐसे ही मदर अर्थ के साथ है। So pran here I have categorized it into P, which stands for provision. Provision जहाँ पे हम बात करते हैं water, material, energy, जो भी हमें basic need requirement चाहिए अपनी life को बनाए रखने के लिए. Then regulation, provision है
हम देख रहे हैं प्रोविजन है ऑलरेडी, मदर अर्थ ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट हमें उसको कुछ रेगुलेशन भी जरूरी है, रेमिडिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, सो दैट वी शुड नॉट कीप ऑन यूटिलाइजिंग इट विदाउट एनी प्लानिंग. एंड वी शुड ए स्टैंड फॉर हेयर एसेट. एसेट इकोसिस्टम है हमारा, जिसको हमें एज एन एसेट रखना है, ना कि उसको हमें मिसयूज करना है उसको, और हमें सेल्फिश नहीं होना है. सो इट इज एन एसेट विच वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट. देन N stands for nature human interaction. So we should, जो इंटरेक्शन है हमारा हमारे प्रकृति के साथ, इट शुड बी इन सच अ वे कि दोनों हार्मनी ग्रोथ करें, लेकिन इन अ हार्मोनियस मैनर. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सो कॉल्ड हम मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, बट हमारा नेचर जो है उसके कारण अफेक्ट हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इफ दिस plant framework is there in our approach, what we are doing, then definitely we will be able to prevent the degradation and promote the sustainable development. Another which I focus on is the sustainability approach, क्योंकि sustainability में ही हम greener living की बात करते हैं. So in this, there are 4 quadrants, and all these 4 quadrants are responsible for maintaining that sustainability. So the interaction between individual and environment is the first quadrant. The second is community and the environment, because the individual, yes, it is true that individual can make a lot of difference, but unless and until the entire community supports or the entire community come together in protecting the environment, the degradation cannot be stopped. And third is quadrant is the ecosystem, and fourth is when we are talking about the mitigation. So here today I'm going to focus on the first two, because if I'm going to focus more, it will require more time. I'm focusing on just the first two quadrant, that is individual and the environment, community and the environment. So when we're talking about the individual and the environment, the first and foremost thing we should ask, what is our role in protecting the environment? So when we are, the question of if we, whatever we are using, we should ask ourselves, do we really need it? We need something. If we don't use it regularly, then we should think before purchasing or before storing it with us. And we should also focus on maintaining and repairing the things which we already own, rather than purchasing new things. So we should drive less, save more, reduce, reuse, and recycle at home and at workplace. Awareness building about human impacts on the planet need to be there, and we should change ourselves first as how we live, work, eat, or play. And it should be, the change should be there in our consciousness, which will be going to influence our lifestyle, work style, and spending. There is a very recently term आप लोगों ने सुना होगा, locavores. लोकावोर्स उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लोकल प्रोडक्ट को यूज करते हैं और लोकली ही वो दे प्रेफर गोइंग टुवर्ड्स द recycling, reducing, reusing aspects to be the change agent. Now when we are talking about the what is the meaning of the reducing, so buy only what you need, because a better way to reduce waste is not by creating it. And we should reuse. If you have to acquire goods, try getting used ones or obtaining the substitutes. When we are talking about recycle, when we are discarding or doing the waste disposal, we should find ways to recycle it instead of letting it go to landfills. So as a nation, we are generating more garbage and we don't know what to do with it. Ineffective or irresponsible disposal of this waste can pollute the environment and pose a public health risk. We are running out of space in existing landfills. And at the same time, many researchers have shown that it is not easy way to get rid of the garbage. That once we think that कि उसको bury कर दिया है या उसको जला दिया गया है and it is forgotten. No, it is not like that. Current disposable methods threaten our health, safety, and environment and pose additional indirect costs to society.
Most industrial, commercial and household waste is now being placed in landfills और उनको ऐसे discard कर दिया जाता है. Waste treated in this manner may contaminate groundwater, rivers, streams. So when waste is burned, it releases hazardous gases here and leaves toxic residues in the form of ash. और जब ये ash जो है, जो hazardous waste by product होता है, they find their way into human and animals in the one form or the other. So it is very important to focus on as how we can play our role to be the change agent and how we can go green by recycling, reducing and reusing. So how we can reduce our daily waste when shopping, select products with minimal packaging, जिससे उनको बाद में आपको उनको dispose करने का नहीं manage करना पड़ेगा आपको. Buy items in bulk. Instead of using the grocery stores plastic bags or paper sacks, bring your own reusable cloth bags. Use rechargeable batteries. Use cloth napkins instead of paper and silverware in disposable plasticware. Refill water bottles from gallon containers or install a filter on faucets to directly fill water containers. Select durable products that may cost more, but they will last longer and save in the long run. Choose recyclable products and packaging and then be sure to recycle them. So this is the responsibility of the our as an individual, how we can change, how we can be the change agent and can play our role. Now when we are talking about the community and the environment, so the community need to be these the values towards like हमारे भारतवर्ष में तो हम नेचर को पूजते हैं. काफी सारे ऐसे त्योहार रहते हैं जहाँ पे हम नेचर को वर्शिप करते हैं. तो ये हमारी सोसाइटी में शुरू से ही है. सो ये वैल्यूज जो है हमारे जो पुरातन समय से चले आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम मटेरियलिज्म के उसमें भूल गए. वो हमें वापस उसमें जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. सो द कलेक्टिव ओरिएंटेड वैल्यूज, जब बच्चा बड़ा होता है उसको ये सारी चीजें बताई जाएं, जिससे कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग चाइल्डहुड उस बच्चे को समझ में आए कि हाँ, हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें उसका ध्यान रखना है. Community cohesion is required. Community cohesion, when we are calling about, is community unity. Everyone should come together to protect the environment. Like initially अगर आप जाएंगे हमारे इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, तो लोगों ने बिश्नोई समुदाय जो मूवमेंट जिसकी हम चर्चा करते हैं बाहर विदेशों में, नॉन वायलेंट वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड. इतने वो लोग कैंपेन चलाते हैं, तो उसका उन्हें आइडिया हमारे यहाँ से ही आया है. जब लोगों ने पेड़ों को एक अपना मानवीय घेरा बना करके उसको प्रोटेक्ट किया, जब उसको काटा जा रहा था और उसमें काफी लोगों की जान भी गई. तो these are all the things which are there, but हम कहीं ना कहीं खुद ही भूलते जा रहे हैं उसको. So we should focus on understanding our own. We should not think that जो हमें बाहर से मिलता है that is good. नहीं, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, अगर आप उसका विवेचन करेंगे, अगर आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे तरीके से बताया गया है कि कैसे हम पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं प्रकृति के साथ. So we need to partner with different resources, organizer. काफी सारे NGOs जो हैं, काफी सारी संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं. हमें उनके साथ जुड़ करके अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को और स्ट्रेंथन करना है कि वो जो नेचर के साथ साथ हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं. We should use local resources for local solutions. We should involve the whole community, क्योंकि जब तक सारी कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, सोसाइटी के मेंबर्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी. Negotiation and consensus building from within should be there. Ability to incorporate and adopt external resources within local context. And we should respect, again and again मैं इस बात पे हमेशा फोकस करूंगी, बोलूंगी इसको,
हाईलाइट करूंगी कि हमें हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल इश्यूज को रिस्पेक्ट करना है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनसे काफी सारी नई हमें चीजें पता चलती हैं जो कि दूसरी कंट्रीज हमें एज अ नॉलेज के उसमें दे सेल इट टू अस एंड वी से वाओ कितनी अच्छी डिस्कवरी की है आपने, अरे भाई वो तो हमारे पास ऑलरेडी थी। So a green community should do the following: pick up litter, recycle and reuse, save water, store water, catch rainwater, maintain energy efficient buildings, either retrofitting existing or building a new, manage land and lakes for environmental preservation and conservation, make its membership aware of green products and services available to them, and use energy efficient transportation. So it is recommended to use a system approach by using widespread community awareness, integrated involvement, and using a common language to identify what sustainability means. जैसे पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो दी गई थी कि उसको बोला गया था आप कितना अर्न करते हैं वो डेवलपमेंट है, तो वो पूरा मटेरियलिस्टिक वे में डेवलपमेंट चला गया, बट धीरे धीरे उसमें आया कि नहीं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मटेरियलिज्म, rather we should take care of our natural environment also, like the development which is going to take place. It means that it should the process should be adopted which should be within the limits of available physical, natural or social resources, so that it allow the living systems to thrive in the existing environment rather than at the cost of the existing natural environment. The pillars of sustainable living, when we are talking about, after going through all this, the various the frameworks which I have identified here, it focuses more on preservation. It focuses on protection. Preserve करना है जो हमारे पास है उसको preserve करना है, because the natural resources they cannot be created just within overnight. काफी टाइम लगता है, काफी सदियां लग जाती हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में। जो है हमें उसको प्रिजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए कमिटमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। सो ये जब तक 3 पिलर्स की बात करते हैं जो हमने अभी तक बुक्स में पढ़ा है और जो अलग अलग उसमें है, जहाँ पे मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था 3 पिलर्स होते हैं, जिसमें एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी के बारे में बताया था इनिशियली जब मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लेक्चर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो 3 पिलर्स हैं जिसपे हमें फोकस करना है फॉर सस्टेनेबल लिविंग इज प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड कमिटमेंट। और इसमें रोल जो है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी का दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है, तभी हम सस्टेनेबिलिटी का जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, एंड वी कैन लिव इन वी कैन हैंड ओवर द our mother earth in a better manner to our future generation. So when we are talking about sustainability, in the last I'm going to say that it is our responsibility to protect our nature, our mother earth, and for this we should not forget the 3 R's which I have mentioned, which is reduce, reuse and recycle. So when we are talking about reducing, especially the reducing thing, so we should reduce the amount which we buy, because that is the most significant of all the options to manage the waste. And the key is to only purchase good that we need and in the right amount. If we never generate products in the first place, we do not have to extract raw resources, manufacture goods from scratch, come up with shipping materials or utilize additional resources for shipping. और फिर हम उसके बारे में पहले हमने उसको ले लिया, अब हम उसके बारे में सोचते हैं कि अब हम इसको कैसे डिस्पोज करें। So initially, right, for the first and foremost stage is reduce करना, कि हम सिर्फ उतना ही यूज हमें जो जितना जरूरत है उतना ही हम उसको लें। As a result, what we can do, we can choose items what we need and not want. देखिए need और want में difference होता है। need जरूरत होती है, want हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हम जरूरत की तरफ ज्यादा ध्यान दें, इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। So people who keep upgrading their electronics, जो सेल फोन अपना अपग्रेड करते रहते हैं to the latest design,
they are very likely to waste their money and also creating unnecessary waste natural resources. Shopping for high quality items, again, it is not advisable. Then we should use minimum packaging and we should buy local products. Then coming to the reuse हमारा जो idea है वो है being wasteful makes many people uncomfortable. So we should keep on reusing whatever we are purchasing. We should reuse like for example बहुत छोटे छोटे examples हैं इसमें. Containers जो हैं जो घर में यूज किए जाते हैं हम उसको स्कूल के प्रोजेक्ट्स में या घर में जैसे टायर है तो आप उसको अपना इसमें गार्डन में यूज कर सकते हैं. जो आपके क्लोथ्स हैं वो दूसरों को दे सकते हैं फॉर चैरिटी और टू द फ्रेंड्स. एंड वी कैन ऑफर फर्नीचर एंड हाउस होल्ड आइटम्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड टू द पीपल हु नीड देम. पेपर दैट हैव बीन यूज्ड वन साइड उसका सेकेंड साइड जो है उसको हम यूज किया जा सकता है. जो ओल्ड टॉवल या शीट्स बेड शीट्स होती हैं उनको स्मॉल पीसेस में कट करके एज अ डस्ट क्लॉथ यूज किया जा सकता है. Books and magazine can be donated to the schools or the libraries. Then many a times we use the packing materials, so that can be reused again and again for the packaging. Recycle की अगर हम बात करें तो when we are talking about main benefits of recycling are it generate industry, recycling creates jobs, it avoids cost of recycling. So when we are talking about like for example recycle centers are there, which are there we can which focuses on recycling the products. And these are the things which we can most of the major recycling things we can think of is donating at these particular centers so that our the products which we are not using they can be recycled. So in short, when we are talking about the green living or when we are talking about the sustainable living, rather than looking outside we should look within ourselves and think of as how can we more responsible towards our mother earth and our mother nature. So that was all from my side for this particular session. And if there are any questions, then kindly let me know. Can you please open the chat box? We can see if any questions are there. Okay, in between, I think there was no audibility. One has written No, no. ma'am, audible is, we have checked on the Google Meet. It's audible. Maybe some problem with them. Okay, Also okay, Wi-Fi or okay. ma'am, PPT request hai. Definitely, if the Sure. speaker will share, we will definitely share with you. So, if no questions, it's time to formally thank Dr. Sharma. Dr. Sharma, I will take a promise from you that last time we missed you in our offline conference. So, this time we are again hosting one offline conference on 12th, 13th, and 14th of July. Okay. 2023, and it's so many months. I would request you to please freeze your dates. Sure, sure. And this is a बिल्कुल promise I want from you. We don't want to miss you this time. बिल्कुल बिल्कुल पक्का. So we look forward to have you at that time, ma'am. Here it will be a pleasure to host you in Alwar. And from the organizers and from the delegates and from our patron and principal, I would like to thank you for your time and the wonderful deliberation. Slides were so beautiful. And the way you spoke about reduce, reuse, and recycle and the pillars of sustainable development, I think this is the success of ISTTP 6, having people like you. Ma'am, आपका Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. I'm thankful to all the audiences also. Thank you so much. Thank you, Dr. Mamta. Thank you very much. Thank you so much. So with this, we come to an end of the third day of ISTTP 6. And I would like to thank all the keynote speakers, all the delegates, my team, Dr. Sudham Sukhwal and Sheetal and Rishi, Dilip, our patron principal, Dr. Kamsingh ji and everyone who are here and made this third day of ISTTP 6 a successful one.
So we will see you tomorrow again at 11:15 sharp. And till then, take care and goodbye, and I'll see you then. Bye. This is Dr. Mamta Sharma signing off from RRC Alwar. Take care. Bye bye.